all you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost refund. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset. Hello guys, and welcome back to this amazing channel, Geeks for Geeks Practice. मेरा नाम है अभिनव और we are back with our next video of our DSA marathon series. कैसे हो आप लोग? How are you guys? बढ़िया? Hello, hi निखिल. I am fine यार. मेरी आवाज सही से आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ. तो आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म कर दो एंड लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. दिस टाइम वी हैड दिस सीरीज ऑन थर्सडे एक्चुअली बिकॉज ऑन सैटरडे आई एम नॉट फ्री, so I do not wanted to break this series for even a single week because lot of live people who join us. So I hope you guys are here. Hi others, how are you guys? So guys, please, if you are in the live, mark your attendance, hit the like button so that I can know that how many people have joined the live already, and then we will start. Hello. Hi Nikhil, hi others. कैसे हो यार आप लोग? How are you guys? Nice. So our topic for today is stack, right? So we will discuss about stack data structure. Okay. We'll be discussing stack from the very basics, from the very बहुत सही, बढ़िया यार. So from the very basics, ठीक है, हम पूरा उसको बेसिक से समझेंगे stack क्या होता है, हम उसका array implementation, linked list implementation भी समझेंगे, और साथ में as we do in every class, we will be solving a lot of problems on stack, right? Great. Hi Sivraj, how are you? Hi. So let me share the screen and we can start then. So great. Next 3 days is stack. No. So this live is for stack. Sivraj. Actually, I am busy this Saturday, so we plan to have this time live on Thursday, right? So we'll have this week live of a stack, and next week we will continue with stack, Q, DQ, and all the other topics we'll be covering. Okay, but yeah, for this week it's a stack only. Okay, great. So let's start. Are you guys there? Can we start, guys? Write a +1 if we are good to go. Write a +1. Great. So guys, what is a stack? A stack, we all know, it is one of the data structures in programming language, right? It is one of the data structures in our programming language, right?
अब you must be thinking, Abhinav, we have discussed about a lot of data structures before. हमने बहुत सारे data structure already पढ़े हुए हैं, right? We discussed about arrays, we discussed about vectors, we discussed about linked lists, we discussed about sets, maps. There are multiple data structures. Then what is the need of stack? What's the need of stack, right? So let's discuss that what stack is and why do we need stack. Then we'll move forward for implementing it also, right? So the thing is, see, if I talk about array, right? What is array and why do we use array? Array is a data structure where we store, uh, like I will say, sequence of elements. Okay, when we have multiple elements, we store in a stack. And one property about array is that array is fixed, right? Array जो होता है उसका fixed size होता है. Arrays have fixed size. That is one thing, right? Next thing that comes into picture is vectors. What are vectors? What are vectors? Vectors are similar to arrays. Vectors are something which are similar to arrays, but they have one different thing, that they have variable size. Like they have, if you will go in the high level, तो और भी बहुत सारी differences होते हैं. जैसे कि arrays में data is stored in contiguous memory location, vector में नहीं होता है, random positions होती है. But in the higher level, why do we use vector? Because it's variable, right? Sir, hi to okay. Hi, Giridhar. Uh, okay. Hi, Sarath. Welcome back. Okay, so this is vectors, right? Now, next thing that comes into picture is we discuss about linked list, right? We discuss about linked list. Why do we use linked list? Linked list is again a sequence of elements, and the difference here is that here we have items linked with each other. Okay, and why do we use linked list? We use linked list because in linked list the modification of the linked list, rearrangement of data is very easy. We can just break a link from one side, we can put it another side, and so on. So it's very easy to manipulate the structuring of a linked list. That's why we use linked list, right? And then set and map has their own properties. Like sets are used to store unique elements, maps are used to store key value elements, and so on, right? Now comes Abhinav, when we have all of this, why do we need a new data structure? Because arrays is a data structure that can cover everything. Okay, if even array is not able to cover, we have vectors. Vectors can cover everything. Why do we need this stack? Why do we need the queue? One thing very important. See, stack is actually not a fundamental data structure. What I'm saying, stack is not a fundamental data structure. What is fundamental data structure? You must be thinking, देखो, there are some data structures that are provided by a programming language. Okay, जैसे कि अब जो array होता है, so every programming language has a array. हर programming language पास में उसकी एक array होती है, right? And every programming language we can implement a linked list using classes and object. हम linked list भी implement कर सकते हैं. If you will see, no programming language has stack inbuilt. No one of that. C++ में we use STL. Java में we use Java collections framework. Python में तो there are multiple other things that we use, right? We use list as a stack, right? So stack is not a different data structure. It's not a fundamental data structure. It is a data structure that is derived or that is implemented through other data structures like arrays and linked list. Like arrays and linked list. But stack is a data structure that follows the property of LIFO. What is LIFO? LIFO means simple, last in, first out. Okay. So if there is any data structure, if there is anything, any data structure, any object which is able to follow this property of last in, first out, it's a stack. ठीक है? And you have seen this multiple times. मैं आपको example देता हूँ. अब when we let's say that there's a table, and on the table you are putting some books and then taking them out. तो आप कैसे books रखोगे? You will first put the book 1, then the book 2, then the book 3, then the book 4.
So you're putting books one by one above above one, right? So you will say, Abhinav, in this case, I can also take a book from between. But ऐसा allow नहीं, let's say. So if you're putting some books in this stack, this is known as a stack of books. And if you have to take one book, आप सबसे ऊपर वाली ही पहले निकालोगे, right? So basically the push is happening from the top. Push means we are keeping one extra book, and pop is also happening from the top. And just assume that their borders are sealed. You cannot take anything from the border. This is what a stack data structure is. Okay. For example, hi Nekaj, how are you? This is a bottle, right? If I have to put something on my bottle, I will put from the top only. And if I have to take out, I will take out also from the top only. Right. So a stack is a data structure where we define it something like this, like a container, which has only one opening, which is the top, which is the top of the stack. Which is the top of the stack. It has only one opening, which is actually the top of this given stack. Okay, okay. And when you have to insert elements in this stack, we insert it from the top, and when we remove it, we also remove it from the top. Right. Ab you will say, Abhinav, you just say ki stack is implemented using array and linked list. But in array it's not the thing that we can only insert from top. Even in array there is no top. Yeah, I know there is no top in array. I'm not saying कि यार stack ऐसे ही बनता है. Memory में stack कैसे store हो हमें नहीं पता. ये the container is just used to represent the stack. Okay, this is how it will be represented. Backend में जब implement करने जाओगे ना, so you see that stack is actually implemented using linked list and arrays only at the backend. ये चीज आप लोग चेक करोगे और हम लोग आज करने वाले हैं. Today we will discuss both. Today we will see how we can implement a stack, using arrays, and we will also see how we can implement a stack using linked list. Both of those things we will discuss today itself. As I said you, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे. ठीक है, तो पहले आते हैं अभी एक कंक्लूजन पे. What is a stack? Stack is a data structure that follows LIFO property. LIFO means last in, first out. Means the last element that will be inserted will be first taken out. For example, if this is the stack, let's say if I'm putting elements like this, I will first put 5. I will put 3. Then I will put 7. Then I will put 4. So it will be inserted one above another. एक के ऊपर एक रखते जाएंगे. और आप मुझे बताओ, अगर मैं इससे अब एक एलिमेंट को निकालता हूं बाहर या एक एलिमेंट को देखने की कोशिश करता हूं, if I will try to pop a element or if I will try to access the element, which element it will be? हम कौन से एलिमेंट को देख पाएंगे? क्या हम इस 3 को देख पाएंगे? Can we able to see this 3? No. 5 no, because this is closed. It's a closed container. We can only see from the top. So which element will be able to see? Element number 3. Element number 4. This will be the top of the stack, right? So in a stack, we insert elements, and when we remove when we try to access the element, we are only able to access the top element. अच्छा मेरे network सही है ना? मतलब is my voice lagging? Is my video lagging? Do let me know. I can actually change the Wi-Fi if there is some problem. Everything is fine, right? ठीक है? Okay. Now let's understand first thing about a stack. That is how can we implement a stack using array. ठीक है, तो हमारे पास
like when we solve the problems, हम ऐसे array का implementation नहीं करते. When we solve the problem, we have the stack container in STL. Just like we have vectors, we have sets, na. We also have a stack in our container in STL. But to understand the very basics, I'll be first telling you guys how we can implement stack using array. ठीक है? अब देखो, implementing stack using array, the first major thing is that it should be, sorry, it should be follow the property of leaf. That's it. So if we are having an array which follows the property of LIFO, that's it. If we have an array which is following the property of LIFO, that means it's a stack. That's it. Any data structure that can follow the property of LIFO, we will call it as a stack. Okay? So we also have a problem based on that. Okay, but let's see how can we do this. Okay, give me 1 minute. Okay. Okay, ठीक है. So let's see how can we do this question. Question is very simple. You have to use an array to implement the property of an stack. That's it. ठीक है. अब देखो, अब if there is a stack, or if you will take an array, you will take a size of the array also, that what will be the size. So for now, let's assume that the array size that we are considering is 10, means our stack can also store elements up to 10, right? So what I will do, I will create an array. I will create an array. Okay. And let's say this is the array. And size is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So size is 8 actually. Size is 9. Okay. So we have 9 elements in this array. Means this array will be used to implement a stack which will also have the size 9. Simple. Okay. Simple thing. Now, what happens in a stack? In a stack, we have to access the top element. Top means where we have to insert the value. So here what I will do, here I will take a pointer called top that will be at the start of the array. And whenever I will insert something in this array, it will be added where this top is present. देखो, in many websites or resources you have seen top is starting from -1. So in that case, they first move top and then they put element. Here we are starting from 0. So kuch bhi karo aap. It's just simply the LIFO technique should be followed. How you are implementing is doesn't matter, right? So what I'm saying is I will start from the 0 index, right? Up, if I have to insert element in this stack, what I will do? So how the push operation will work? So let's say if I have to push a value x inside the stack. So if I have to push something inside the stack, I will say, let's do one thing. Let's make the array top equal to that x and then make top plus plus. So what will happen? Let's say I'm trying to push 5. So 5 will be added here and my top will move forward. So it is not an array. It is working like a stack like this. It is represented as an array, but ultimately it is working as a stack. Okay, 5 is inserted. Okay. Now let's say I am asking you to push value 7. So 7 will be inserted here. 7 will be inserted here. And I will move forward. Okay. Now let's say I am saying push 3. So 3 will be inserted here. And I will move forward. So it's an array only, but it's working like an stack. Does it making sense to you all? Guys, बताओ. शिवराज, शरद, Nakaj, others, Nikhil, guys, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Please आप लोग like कर दो so that I can see how many people have joined till now. Okay. So please put your attendance also. Right? Great. Okay. Amazing. Now. Hi Akili. Okay. अब देखो, अब you will say Abhinav, push is fine. How can we pop from this? अब देखो, pop is very easy. For pop,
I will just do one thing. I will say, sir, it's mean exactly Sivaraj. Searching in stack takes order of n. Right, right. Okay. So now what I will do is key. I will say pop. Up for pop, it's very easy. When I will ask you to pop something, you will just do one thing. You will just do one thing. You will say top minus minus. So if top is going back, means you have actually removed this element 3. How you have removed this element 3? Because if next time someone will try to push an element, that element will be overrated to a new value, right? This is one thing. And then again top will move forward. If someone will ask you to check if stack is empty, then what you will do? So see, if you remember, we started our top from 0. So if I will pop elements one by one, it will again go to 0. So I will simply say that if my top is 0, that means it's empty. And how I can say that it's full? So if top is equal to the size of our array, means when top will reach the end, means it's full. And how can I access the top of the means the last element of the stack? Then I will say the simply return top minus 1. So ARR of top minus 1 will represent the last element or the top element of the given stack, right? So if I will write here how you will be implementing a stack, you will take an array, you will take an array with the same size of the stack. Let's say stack is of size 10, right? Then you will take a top pointer starting at 0. Many people start from -1. It will have a slight change in the implementation, nothing else, right? Now, okay. Now let's say if you have to push something in the stack, you will say simple ARR top is equal to X and top plus plus. If you have to pop something, you will say simply top minus minus. That's it. If you have to find that the if the stack is empty, just simply say if top is equal to 0, it's empty, else it's not empty. If we are finding if it is full, so let's say the array size was n. Let's say the array size was n. We have to create the stack of size n. So I will simply say that if your top is equal to n, means it's full. And if you have to find the size, so size is equal to the top. So wherever your top will be, that index will be the size of the stack, right? Simple. Okay. So this is how you will implement it. Now let's see how to implement it here in this question. Okay. In this question, if you will see, they have already given you an array and they have already given you a top, right, at the back end. So array and the top is already given to you. The only thing is that you have to implement the other functions. Okay. And for doing that, they're asking you write a program. We need to we need to predefine. So if you want to see while creating the stack using STL, there's no need to predefine the size, Sivaraj, because if you are, let's say if you're using a vector or if you are using a linked list, then predefinition of size is not required. Then you can do if you're using a vector of or a linked list. But for array, you need to predefine a size. Okay. And even everything has a limit now. Even vectors are flexible, but they have a limit. Okay. And if you are try to put elements more than the limit of a stack, it will be stack overflow, a very famous term. Okay, stack overflow. So we will come on that later. Okay. Yeah. So makes sense. So what this question is? Question says that write a program to implement a stack using array. Your task is to use the class as shown in the class editor. Complete the function push. The push method should take an argument x and push inside the stack. Pop will return an integer. So whichever is the top, it will return and pop out from the stack. If the stack is empty, then return -1 from the pop function. This also you have to do. And they are not saying if the stack is full, then how can we push? I think it will never become full according to them. Yeah, it will never become full. So let's see. So first what I will do, first I will write a function called
is empty. Yeah, simply empty. So empty function will be used to check whether the stack is empty or not. And here I will make my top initially as 0. Okay. So I will simply say that if my top is 0, that means the stack is empty. Otherwise, stack is not empty, right? Then how can we push? For push, if you remember what I said, this. What? In that array, at the top, just make x and then make top plus plus. Okay. And in case of pop, what you will do? First of all, in case of pop, if the stack is already empty, so if the stack is already empty, then you will say return -1. Else you will take the top element from the stack, and first you will first subtract. So first you will say top minus minus, and then you will just return that element which you have popped. Okay, let's first compile it, then I will. Maybe instead of this empty function, we can directly write that if top is equal to 0. That's it. I have to see one thing. Okay, I think this we have to create here. Let me see. Okay. So I think what, okay. I missed one thing, guys. So they are actually already initializing the value of top. There is no need to initialize it by our own. And they are actually starting top from -1. I told you na, that in some cases we may start top from -1. So in this case, the only thing is here I will put it -1. That if the top is at -1 means it's empty, return -1. Okay. Else what I will do? Else I will first get the value of the top, ARR of top. Then I will decrease it and then I will return that value. Or I can maybe do one thing, return top +1, which we have actually removed. Okay. And here we will first increase the top and then do. Yeah, yes. That is what I missed, Akali. Thanks for putting it up. Let me. Yeah. And is there any other issue also? Why is it not able to solve now? Okay. अब क्या दिक्कत आ रही है यार? It should be done now. It should be done. Can anyone tell me what's the problem that we are facing here? आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है यार? इसको यहीं पे हम लोग प्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं. That is a different thing. But why are we not getting output? So they have also done the same thing.
आपका हो गया सेम कोड पर? आई थिंक कुछ गलती करी है मैंने। आई थिंक मैंने जो टॉप इनिशलाइज कर दिया था ना, मैंने एक बार रिफ्रेश किया, लेट मी चेक। ये चल क्यों नहीं रहा है? वेट, let me reset and try again. टॉप इनिशलाइज ऑलरेडी हो चुका है। आदर्श आपने क्या किया है वो बताओगे मुझे? Here also thing is same. Initialize top equal, no, that is already initialized here. You can see this is already, they are already saying that they have initialized the top as -1. It is already mentioned by them, so I don't feel that it is required. There is some problem. चलो मैं एडिटोरियल देखता हूँ अगर, तो एडिटोरियल में ये दिया गया है, राइट? अगर मैं एडिटोरियल को पूरा कॉपी भी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी द एडिटोरियल, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब चल रहा है। अरे तो क्या गलती थी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, या नहीं नहीं नहीं, इट शुड बी प्लस प्लस टॉप ओनली, बिकॉज टॉप पहले इंक्रीज होगा, राइट? नेकच वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यार ऐसा कैसे, लाइक हाउ इट इज पॉसिबल? वी वर, so editorial maybe they are doing the same thing. See, I will show you. See, what are we doing is this, okay? Wait. See, what are we doing is this, okay? Let's compare both the functions what they have given. So this is mine one, okay, and this is what they have given. Both are there, right? See, here they are saying push A. So they are first increasing top. I am also increasing top. Then they are saying ARR top equal to A, ARR top equal to X. Okay, this is done. Then what they are saying? They are saying if top is equal to -1, if top is equal to -1, return -1, return -1. Int X is equal to ARR of top. Int X is equal to ARR of top. Then top my, oh no, this is a two, bro. We oversaw this multiple times. दिखा ही नहीं वो चीज। Oh man, Gary Bus, others. Yes. This we missed actually.
वेरी सिली मिस्टेक इट वाज. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेगा. So does it make sense how we are implementing stack using array? Is this clear to everyone? है ना? Yeah, exactly. Exactly, Gary. That I missed and I put that two equal twos by mistake. My intention was to put one only, but yeah, I think by mistake we put the two of them. Not a issue. ठीक है. Let's move forward now. So guys, this was the array implementation of stack. Now, similar to array implementation of stack, we also have the linked list implementation of stack, right? Where we will discuss how we can implement linked list, how we can implement stack using linked list, right? So let's see that कि हम linked list के through कैसे एक stack को implement कर सकते हैं. ठीक है, उसको समझते हैं पहले. तो देखो आप, again, अब linked list में क्या होगा? Linked list में I will have my top. You can see they have given a top. And if I will open that, I think driver code, this is what the linked list is. And initially your top will be at null probably. Or is it having any value? Let me check the driver code. So this top that push. Yeah, so this is the SQ. So Gary, it depends on what they want. So if they just wanted to solve a problem with stack, in that case we just use the STL implementation of stack. There is no need to implement all of that. But if they are specifically asking you to implement it using array or linked list, then you should do. Okay. So we should never follow this long method. We should always go with the STL only, because the major agenda of an interviewer is to understand whether you are able to solve the problem, think the logic or not, right? Okay, but if they are specifically mentioning they want this, then you have to do actually, right? So yeah, that is the code. Okay. Right, so let me just check key what is the problem. This is push pop, like I'm just wanted to say, okay, so they are having its top as null. This is the meaning I was looking for. So initially they are making your top as null. Okay, अब देखो how we will use this linked list to implement the stack. Okay, now in linked list they are initially having a value null which is pointing to top. Okay, up see, if someone will put the value on this linked list, okay, let's say I'm pushing a value 7. Because the current value of top is just null, simply a node with the value 7 will be added simply, and it will be null. It will be null. Okay, now let's say if someone wants to again push one more value, let's say 5. Ab dekho, you may be thinking, Abhinav, when it is trying to put one more value 5, you can just simply put it here 5, right, and move the top forward. Then again someone wants to, let's say, push the value 9, then simply push it here, okay, and move forward, right? So this is how it will keep on pushing the values, and the top will move forward. It looks very easy, right? We will just keep on adding the nodes in the linked list.
But guys, okay, let me update the tag also. But guys, the problem will happen. I will tell you where the problem will happen. पता प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी व्हेन यू हैव टू पॉप, बिकॉज आपको जब पुश करना है तो बहुत ईजी है. मैं बताता हूँ कैसे ईजी है. मान लो अब मान लो आपका इस तरीके से आपकी लिंक दे रखी है, राइट. आपको उसमें एक नई नोड पुश करनी है. मान लो आपको इसमें पुश करना है 8. तो क्या करोगे? आप सिंपली एक नोड 8 की बना लोगे. ये आपने न्यू नोड बना ली और ये न्यू नोड जो है इसकी वैल्यू है 8. Now you will simply make your top next equal to that new node. So that new node will be aligned to the next of top. You will first of all create a new node and you will make it equal to next to top, and then you will move your top. So this is how we actually insert a new node at the end of a particular linked list. And it's look very easy. The problem will come when you have to pop. When you need to pop it, how can you remove the last node of this? How can you remove? There is no option to remove it and go back, right? Either you have to take a head also, but that's not a good idea. In that case, it will be order of n complexity to remove. Is there any way where for in pushing also it's a order of 1 and for removing also it's order of 1? Yes, there is one way. What? So what if when we are pushing from the back it's becoming difficult? What if we will just add new nodes from the head and also remove it from the head? Can we do that? Yes, we can definitely do that also. Okay. So, for example, what will happen? What will happen? Ki, let's say, that we are having initially null. Okay. And top is currently at null. If top is null, then simply, let's say if someone wants to push the value 7, then you will just create a new node with the value 7. And so the process will be, say, I will tell you what is the process. So whenever someone wants to put a new value, what you will do? You will first of all create a new node with that new value. So a new node with that new value will be created. So what I'm saying new node is equal to new stack node with the value. Okay. Then you will make that new node next equal to top. So this new node next will become equal to top. And now you will make your top equal to new node. So basically this will go and this top will come here. Up once more. Let's say now if you want to insert 5, so a new node with 5 will be created. Its next will become top, and so this is very similar to how we add new node at the beginning of the linked list or at the head of the linked list. This is very similar to that. Okay, this is very similar to that. 1 minute. Okay, but अब ये तो बहुत similar है. It is just whatever we have. Okay, this is similar to that. But in this case, if you have to pop also, right? Pop is also very easy, because when you have to pop the head node of any of the linked list, it's very easy. You just say top is equal to top dot next, and it will be popped out. So here you will just make your top to top next, and it will be simply popped out, right? So it's easy to push a new node also from the back, and it's easy to remove node also from the front. That is why this is how we will implement stack using linked list. Does it make sense to everyone? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? Okay, let's implement it. Okay, let's implement it. So अब implement कैसे होगा? How we will implement this thing? So for implementation, I will simply say we have the node, right? So in case of push, what I will do? I will first of all create a new node. I will say that new node is equal to new stack node
with the value x. Now what I will do? I will make my new node next. I will make my new node next is equal to top, and then I will might say my top is equal to new node. That's it. This is how you'll push something. And for pop, what you will do? Let's say you have to pop. So first of all, let's say if this pop was here, right? This pop was here, and you want to top was here, and you want to remove this value 5. So first you will store that value in a variable, let's say called x. Okay. Then move it forward to remove it, and then just return the x. Okay. So it's like this, it's like this, and let's submit it. Okay, so there is some segment. Okay, I think there is that one thing we missed, that if the stack is empty, then what to do? So there can also be a case when the stack is empty, right? So for that, what I will do, I will just simply see here that if my top is null, that means the stack is empty. In that case, just return -1 and do nothing. Okay, so done. Okay, does it make sense? Oh, oh, sorry. So yeah, by mistake this course page is open. But yeah, if you guys don't know about our 390 challenge, so guys, we are running our 390 batches and our 390 challenge currently, where if you will buy any course on Geeks for Geeks, and if you complete the 90% of that course in 90 days, then you will get the 90% refund of the course fee, right? So you guys can check out the courses now. Okay, great. So this is done. Okay, cool guys. So is this thing clear to everyone, that how can we implement, or how we are implementing a stack using array and using linked list? Does this make sense to all of you? Does this make sense to all of you? Okay, now apart from this also, we have obviously stack in our STL, just like we have vector, sets and map also, and it is implemented in the same way. We write stack, then we write the like small s is there, then we give the data type, then we write stack name, and that's it, right? And for insulting and all of that, so we have a value called, we have a function called push, that is used to push in the stack. We have the function called pop, that is used to pop the stack. We have function called top, that is used to access the top element. So these are three major functions of the stack. Then we have the empty function also to check if the stack is empty, and if the size function also to check if the what's the size of the stack, right? And you must have heard about this term called stack overflow. So stack overflow, guys, is nothing but when a stack is full, right, element got overflowed format, right? So that is known as stack overflow. Okay, great. So there's a very basic question on this. So if you will see now the applications of stack, where do we use stack? So a very basic application you have heard about is this, to reverse anything. Okay, so to reverse a string, to reverse an array, stack is used a lot. Even our next question will be on that only, that how we can reverse a string using stack. Okay, now second thing that you have heard will be that stack is used in recursion. So when we discuss about recursive stack, you must have when we discuss about recursion, we have the master class on recursion. There we saw that how stack is used in the recursive calls, right? Third thing, the third application of stack was in DFS, and in multiple questions of trees we use stack, and in graph we use stack, right? This is a very important application of stack. And there is a very specific pattern of problem there where we use the stack. So today we'll be discussing multiple problems where you will see that you have to find the next greater element, the next smaller element. Means
your answer of your current index depends on your next index. So in multiple such cases also we use stack so that problems will be solving today. So I will be solving multiple patterns of problem today that will help you guys to understand that what stack is. That will help you guys to understand what actually stack is and how it is used, right? So let's first discuss that how stack can be used to reverse something. Although it is very simple. Okay, we have a question on that also. This is a question. The first question for today that I've taken, a very basic one. So I will first let me add the tag. ठीक है? तो question क्या है? What the question is? Question says that you are given a string s. The task is to reverse the string using stack. Up we know that there are multiple other ways how we can do this. How we can do this. There are multiple other ways that how we can uh, do the reverse of a string. The let's say if the string is Abhinav, right? Abhinav. So a very basic way is to have two pointers and to swap the digits. This you guys know, right? But the next other way that we'll be discussing today will be like this. So let's say if we have a string like Abhinav. So what I will do, I will say, okay, this is a string 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is the string, and you will take a stack and the stack of characters, obviously. Okay, and what will you do? What will you do is you will just one by one take elements of this string and put in the stack. So it will be A, B, H, I, N, A, V. So after taking a stack, so what I will do here, I will take a stack of character, and for this whole string, I will one by one take elements from this S of I and put in that stack, right? Now, now, once this thing is done, okay, once this is done, I will again take elements from the stack and put to this string. So first, I will put V, then A. So because first V is coming out, then A, then I will have N, then I, then H, then B, then A. So what I will do, I will again have the loop, but this case, what I will do, I will, my S of I will become st dot top, and then you will pop that st dot, that top element, and you will return your S. So by putting it inside the stack and then taking them out, because we know the last in first out, the last character which was went in first came out. And because of this properties of stack, anything that we are putting in the stack and taking them out is actually reversed. Anything. It can be an array, it can be a string, anything. Okay. And that is how we are solving this problem. Okay. If we talk about the time complexity now, guys, so all the functions of a stack take a order of one time. Okay. Either it is the push function, the pop function, the top function, the empty function, the size function, they all take order of one time complexity. That is why stack is very efficient. It's just the top now, so it's very easy. Searching, if you have to do search something, then it will be very critical, right? So in this case also our time complexity will be just order of n, nothing more than that. And our space complexity will also be order of n because we are having an stack. Does it make sense? Does it make sense? Everyone, please tell me. Okay, great. So ये हो गया. This is a very basic question on stack. Okay. Now, this is the next question. This is again another not a very difficult, a basic question on stack I have taken.
so that before moving to the main part, I can have some basic understanding of stack, and you guys can understand what stack is, right? So this question says, given a stack S, delete the middle element of the stack. So you are having a stack, and what your task is? Your task is to delete the middle element of the stack without using any additional data structure. So without using any additional data structure, you have to delete the middle element of the stack. ठीक है? अब ये कैसे करेंगे? How can you delete the stack without using any other element? देखो, one part of that is recursion. So if you do not have to use any data structure, then you have to use recursion to solve this problem. But I know if I will start implementing recursion, because it will be a very advanced recursion, so you guys may feel difficulty because many of you may have not uh, uh, gone through recursion. It's an important topic, so I will not go much into recursion today. That is not my topic for today. If you guys wanted to implement using recursion, you can check out my recursion masterclass, recursion marathon, already present on the GFG practice channel. You can check that out, and then you can try to solve this problem using recursion. Okay, but for now, how we'll solve this? Using a very simple thing. So we will be using one more stack to delete the middle of the stack. Okay, so even if you will use recursion will also use a stack at the end, right? Recursion में भी आपको at the last एक stack use करना पड़ता है, ठीक है? अब देखो इस चीज में क्या होगा कि this is your stack. So if this is the stack, your middle element is 30. So in the answer, you can see that 30 got removed. And if this is the stack, up it does not have any middle element, then they are saying that you have to remove 20. So basically, you have to remove the elements half less than the stack. So let's say if the stack is like this, okay? If the stack is like this, 10, 20, 30, 40, 50, then the size of the stack will be 5. And its middle is obviously how much? So it's two elements below. So if you will ignore the first two elements, then comes the middle. Basically size by two elements. And even if you have even number of elements in the stack, like this, okay? So it's, let's say, 10, 20, 30, 40. Then again you have to delete this only. This they are considering as middle. So again, here also size is 4. So you have to remove size by two elements only, and then delete this 20. Okay. So what I will do, let's say that if I am having the first case where we have the 10, 20, 30, 40, and 50, and let's say that our size was 5. So what I will do, I will take one more stack. Let's say stack 2. And this another stack, I will put my size by two elements. How many elements? Size by two elements. I will pick from my stack 1 and I will put to stack 2. So first 50 and then 40. Two elements will be there. Now the next top element I will remove from here. And then again I will put my elements back. So in this way, your middle elements will be gone. Right? So what I'm saying that I will take one more stack and I will take the size of the stack and I will actually divide the size by 2. So whatever is the value n, so I will take a loop that will run that n times, which will push the top element of the stack, given stack in the S1, and pop it from S. And once that is done, means these top two elements are actually went to this stack 2. Then from stack I will pop that middle element. And now the opposite of that. Now from the stack you will put to stack 1 to stack. The opposite of the same. And that's it. Okay?
तो हम पहले स्टैक के ऊपर के आधे एलिमेंट्स को उठा के एक दूसरे स्टैक में डाल रहे हैं, फिर उस बीच वाले एलिमेंट को हटा दे रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, फिर वापस दूसरे स्टैक से पहले स्टैक में ला रहे हैं। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? एरर क्या आ रही है? अच्छा, इसमें एंड नहीं होना चाहिए, सॉरी, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। ठीक है, सबमिट करते हैं। सॉल्व। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये हमारा, अरे यार बार बार ये ओपन हो जाता है। Is it clear? Any doubts, anyone in this question? अब देखो इसका, as I told you, there is one way of this problem which is done using recursion. I'm not taking it now because I know there will be multiple people who are not good with recursion. This I'm giving you as a homework, maybe as your task. So try this. First, go through the recursion masterclass. If you are not good much at recursion, go through that masterclass, and then if you are good with that, try to solve it. Okay, and you will get it. It's not a very difficult point. You will probably get that how we can solve it using recursion. ठीक है, कैन यू मूव फॉरवर्ड? सो गाइस, ये तो हमारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे. दीज टू वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, राइट? We discussed that how we can reverse a string using a stack, and how we can delete the middle part of the stack, the middle element of the stack, right? Now let's see that how can we solve more different type of questions of stack, and a very classical question of stack that you maybe many of you have solved already. It's a very classical question, parenthesis checker. ठीक है, so can anyone tell me how many of you have solved this problem? Just say yes if you have solved, say no if you have not solved. Tell me how many of you have solved this problem already. How many of you have solved this one already? है कोई parenthesis checker? नो, राइट? नो वरीज, नो वरीज. अगर नहीं किया तो हम लोग करते हैं, ठीक है? Okay, you have done. Okay, hi Samani, welcome back. So yeah, so how we are doing it? Given a string s composed of different combination of opening round bracket, closing round bracket, opening curly bracket, closing curly bracket, and square brackets, you have to verify whether the arrangement is right or not, right? Right, so many of you have actually done this question, and many of you have not done this question. So no worries, let's solve this question. And if someone is there who has done this question already, they can maybe try to solve this next gridded element or the stock span problem. So this is our next problem. So if you are done with this question, you can try solving the other two. Okay, but yeah, we will solve this one first. Okay, so it's the parenthesis checker problem that we are going to solve. But what is parenthesis checker? What are valid parentheses? Here you have to check. Here to check that whether the given parenthesis is valid or not. ठीक है? अब how can we check? अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि which parenthesis is valid or which is not valid. Let's say I'm having a string 1 where I'm having something like this. Is this valid? Is this string 1 valid? Tell me. Is this string 2 valid?
Is this string 3 valid? Is this string 4 valid? So if you will see, this string 1 is valid. Why? Because every first thing is every opening bracket should have its closing bracket, and their arrangement should be also fine. You can see here, this is a opening bracket, it also has its closing bracket. This is also there, this is also there, this is also there, this is also there. So every closing bracket have their opening bracket, and they are also in a right format. But if you will see here, this is fine. Okay, this is fine, but here they do not match. Here this is fine, but they do not have their closing bracket. Here this is fine, but this does not have any opening bracket, right? So this is the thing. So you are just giving it a string, and you have to check whether it is a valid parenthesis or not. Does it make sense to everyone or not? Does it make sense, guys? Boli, give me 1 minute.
Uh, Sorry guys. Yeah. So are you guys there? Hi Shivani, hi Shivangi, hi others, Gary. आप लोग हैं यहाँ पे? Should we solve this problem? Others solve करें? Hello. ठीक है. अब देखो how do we solve this problem? Let's start from this first set of brackets that we have. Okay. How can we solve this problem for these brackets? Let's see that. Okay. So we have these brackets, right? देखो. Nice. ठीक है. So how we solve this problem? So what we do? We take a stack. We take a stack. Okay. We take a stack, and this is the string. Okay. अब देखो, I told you ना कि there are multiple problems where we have to compare the current index with the later index. कि हमारी current index को हमें बाद की index में compare करना पड़ता है. और most of the cases जहाँ भी ऐसा होता है वहां पे हम लोग stack का यूज करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखो तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि भाई इस वाले ब्रैकेट के लिए क्या कहीं आगे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा और उसके बीच के सारे ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाने चाहिए, तभी आएगा वो. राइट. क्या करेंगे, अब देखो एल्गोरिथम क्या होता है इसका. व्हाट्स द फॉर्मूला, व्हाट्स द एल्गोरिथम. Algorithm is that whenever you're getting a opening bracket, whenever you will just push it in your stack. So let's say this is a opening bracket, just push it. This is a opening bracket, just push it. अब देखो, when you got a closing bracket, अब देखो, if you got a closing bracket, right, then its corresponding opening bracket should be there in the stack. So this is a stack. When you got a closing bracket, so the same type of opening bracket, so it's a closing bracket of curly, round, circular. So in the stack top also the opening bracket of round should be present, and you can see it is present there, the opening bracket of round. Right. So here when you have the closing bracket of round, here we have the opening bracket of round. That means the match happened, means for this opening bracket you got its closing bracket. So you will pop it from here. Okay. Now next move forward. Now again it's a opening bracket. So if it's a opening bracket, push it. Again it's a opening bracket. So again push it. Now you can see again it's a closing bracket. So if it's a closing bracket, just check the top. If top has the same opening bracket, yes, it has the same opening bracket, just remove it. Right. Now it's a closing, it's a opening bracket. So if it's a opening bracket, just push it inside the stack. Now if you got the same closing bracket, just remove it. Now it's again a closing bracket, and see, when this is the closing bracket, in the stack top the same opening bracket is present, means again the matching is done. So again remove it. Now it's again a closing bracket, here it's a opening bracket, remove it. Now it's a opening bracket, so the same opening bracket will be pushed here, and next is the closing bracket, so it's removed. Up in this whole process that we did, there are three things we have to take care of. When there is a opening bracket, I will push it. When there are closing bracket, the same type of opening bracket should be at the top of the stack. And if it is there, pop it. If it is not there, simply say return false. Right? And at the last, your stack should be empty. So if your stack is empty at the last, then only the answer is true. Otherwise, the answer is not true. Let me give you an example on that also. So देखो, ये वाला तो हमारा pattern सही था. That is why at the last आपका stack empty आ गया. Your stack became empty at the last, right? But let's say I will take another string. इसको मैं side कर देता हूँ. Let's take this one. Up in this one, if you will see the second stack string that we taken here, if I will write it 0, 1, 2, 3, see exactly Gary. So first I got a opening bracket, nice. Then I got a opening bracket, nice. Then I got a closing bracket of the same type, means remove it. Then I got a opening bracket, push it. If you will see throughout the loop there was no problem.
For every opening bracket I inserted, and for closing bracket I removed it. But at the last, your stack is not empty. And stack not empty means there are multiple opening brackets for which closing bracket you have not found. Simple. Okay. Similarly, let's say if I will take this string. For this string, what will happen? For this string, I will remove this. I will take this. So it's a, so I will remove this. It's a opening bracket. It's a opening bracket. And it's a closing bracket of a square. Up when I got a closing bracket of a square, I will check for the opening bracket of a square. But here, it's not an opening bracket of a square. It's a round bracket. So again, it's false. Okay. And let's understand the last this one. I mean this, it's even more different. So यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे तो क्या है कि your stack is initially empty and your first bracket itself is a closing bracket, means there is nothing on the top of the stack. So there's nothing on the top of the stack. There's nothing on top of the stack. That simply means it's false. Means you have a closing bracket, but there's no opening bracket for the corresponding. If we stack, no, this is wrong. No, others. What this is not right. In the stack, we will insert the bracket itself, not just the index. I will solve it. Okay, I will solve it. I will tell you how you can do. Okay, so let's have the implementation, and then I will give you a dry run. Let's have the implementation. So I will take that same example which we have taken here. So what I will do, is it correct? No, that is not correct. That is not correct. Wait. Yeah, there we go. What we will do? We will first of all have a stack of characters. क्या होगा? We will take a stack of characters. Okay, st. Right. Now what we will do with the stack of characters? What we will do with the stack of characters? Sorry guys, yeah, ठीक है. So we will have the stack. Okay. अब देखो. Now what will happen? Now once it's the stack, now I will be saying okay, whenever I will not go through all the whole string, so I will get the length of the string, the size of the string, and I will say let's go through all the characters of the string. So I is equal to 0, I less than n, I plus plus. So I will go through all the characters of the string one by one. All the characters of the string one by one I will go through. Okay. Ab what I said, if it's an opening bracket, like if you have seen, this first was an opening bracket. So what I did, I inserted in the stack. Again, so okay, not this one. This was the same. This was the one. This was the opening bracket. So insert here.
Okay, then this was an opening bracket, insert here. So means whenever you're getting an opening bracket, you will just insert it inside your stack. How you will check? So I will say if I will first get my current character, which is s of I. Now if my current character is an opening bracket of, let's say, round or curly or stack, whatever, doesn't matter. किसी भी टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है वो, किसी भी टाइप का, then you will just say push it inside the stack. उसको stack के अंदर push कर देंगे. Stack dot push cs. If it is an open bracket of any type, I will say stack dot push that character. Okay. Else what I will do? Else I will say, if it is not like this, let's do one thing. एक काम करते हैं. That means it's a closing bracket. So if it's a closing bracket, then I will check the top of the stack. So for example, here, this now a closing bracket comes. Up if it's a closing bracket, we should check stack top should also be an opening bracket. So what I will do, this is my current bracket, and I will take out the top of my stack. I will take out the, oh sorry, not this one, it was a closing, this one. This is your current bracket, you are here, and current bracket must be a closing bracket, and you will get the top of the stack, TP let's say, which will be like this, and you will pop it from the stack. So what I will do, you will take the top of the stack. So you will say top of the stack is stack dot top, and you will pop it. You will pop also. Okay, you pop it. Achha, one more thing will be here. If the stack is empty, let's say that you got a closing bracket and there is no opening bracket for that closing bracket in the top, just simply return false. Because if you're getting a closing bracket, there should be some opening bracket in the stack, right? If it's not there, just simply return false. Else what to do? Else pick out that top and pop it. So now what is happening? The current character is like this and top is like this. Now see. If your current character is an closing bracket of circular and your top is an opening bracket of circular. So if current is a closing bracket of circular, top is a opening bracket of circular, just continue. There is no problem, just simply continue. There is not a single problem, right? Else if current is a closing bracket of curly and top is a opening bracket of curly, then also it's no problem, move forward. Else if current is a closing bracket of square, top is the opening bracket of square, then also there is no problem, means you are getting matched. Apart from that, in any other condition, you will return false. So this is how you will go through the whole string. And at the last, what we discussed, the last check will be that if your stack size is 0, that means return true, else return false. That's it. So let's run it. Let's run and compile it. It's done. Let's submit it. Yeah, you can see the problem solved successfully. We have done it. Does it make sense? Is there anyone who is having any doubt in this problem? किसी को कोई doubt है क्या? बताइए. Please ask if there is any doubt. Clearer? Okay, great. So this is a very classical problem actually of parenthesis. So obviously now others, let's say that this example, right? When you are starting from a closing bracket. Okay, so when you're starting from a closing bracket, there is no opening bracket in the top, and not even this thing. Maybe if simple thing is that if you're having a closing bracket, there should be a opening bracket in the stack top.
right? There should be a closing bracket. If you are currently at a closing bracket, there should be an opening bracket. And if it's not there, it's false. That's it. Explain why, continue. So, Gary, see, if your current is a closing bracket of curly of round and your top is a opening bracket of round, that is fine now. Means you have got your opening and closing brackets. Simply continue to the next character. And same for others. And if they are not matching, return false. Okay, let's do one thing. Let me give you a dry run. Let me give you a dry run for this loop. Okay, I think you guys are. Give me 1 minute, guys. Okay. Uh, you can pop there, Gary, but no matter. See, no matter you have to always pop it. Okay. So I'm popping it initially only, and if it's not matching, I'm simply returning false. So it's not a problem. If you want, you can pop inside here also. Okay, that is completely fine. Okay. If you want, you can also put it in a single if else, but for better experience, I have put it here. Let me explain you this whole code, okay, with a dry run, that how we are doing it. So I will take a screenshot, that will be better. Okay, so let me explain this to you guys, how my code is working. देखो, ये है राइट, ये है राइट. अब देखो क्या होगा कि let's say that your stack, let's take the same example maybe. ठीक है, सेम एग्जांपल के सब कुछ सेम कर लेते हैं. स्टैक वी कैन आल्सो हैव द सेम. ठीक है, लाइक दिस. अब देखो हाउ इट विल वर्क. ओके, हाउ इट विल वर्क, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. First, what I'm saying, go through all the characters. I'm going through all the characters, right? So we start from this one. Because it's a so what I'm saying, whenever it's a opening bracket, just simply push inside the stack. Okay, so it's a opening bracket, push it. It's a opening bracket, push it. Now came a closing bracket. Okay, now came a closing bracket. Now what I'm saying, so and currently I'm here. Okay, now when it's a closing bracket, I'm taking it in the ch, so my ch will be this closing bracket, this one. Now I say it's a closing bracket, check the stack top. अब देखो अगर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया और मान लो स्टैक में कुछ था ही नहीं, देन आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, आंसर विल बी फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर स्टैक में है, so it should be the same type of opening bracket. How you will verify? So I'm taking the top out of the stack and I'm popping it also. So my top will come out like this. This is the top and I'm popping it. Now I have to check that they both should match. So you can see this was a closing bracket of curly. This is a round. This was a opening bracket of round. So means they match. And if they match, I'm saying continue. Continue means go to the next character. So next character is this. Okay. What is the next character? It's a opening bracket of square. So just push it. Now opening bracket of round, push it. Now again a closing bracket of round. Just like you got here, right? One more you got here. So it's a closing bracket of round. Top is opening bracket of round. Just pop it and continue. Right? Continue. Now it's the opening bracket again. Oh, here
it's a closing bracket, again pop it. Okay, now next is it's a closing bracket of square, and top is the opening bracket of square, means again they match. So if they are matching here, just continue. So just move forward. Now it's a closing bracket of curly, and top is the opening bracket of curly. Again what to do? Again just continue and pop it. Okay, and finally if it's a opening bracket, put it. If it's a closing bracket, take it here, then get the top, it's the same, just remove it. And finally, because your stack is empty, as the last step, it will be true, otherwise it should have false. Does it make sense to everyone? Others, Gary, Shivani, Shivangi, right? Guys, clear है? समझ में आ गया कैसे हो रहा है? Got it, right? Great. 1 minute. ठीक है, बढ़िया. चलो यार, this was the really good question. Let's move forward. So next question that we have is this: the next greater element. The next greater element. Okay. What this question says? This question says that given an array of integers, the task is to find the next greater element for each element of the array. So the question is very simple. You are having an array where for each element of the array you have to find its the element, the next greater element, means the element which is present after it and which is greater. Okay, not just the neighboring. No, maybe the neighboring one is not greater. Whichever is the next element is greater, that you have to tell. And maybe for some of the elements there can be no next greater element. Okay, so it will be -1. Okay, it will be -1. So how can we solve it? Let me first explain you this problem. So for example, that your array is like this. Let's say 5, then 3, then 8, then 1, then 9, then 6, and then let's say 9, then 3, and then 6. Okay, so it's 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अब देखो गाइस, अब इसमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. क्या करना है? लेट मी अपडेट द टैग हियर. It's the next greater element. ठीक है. अब how we will find next greater element? So I will say that okay, this is the array, this is the array, this is the array. Okay, and how we will find the next greater element for this array? So I will say that key for this 5, which is its next greater element? Like 8. Okay, तो 5 के लिए इसका next greater element कौन सा है? 8 है. So I will take a same size answer array. So for 5 answer will be 8. अच्छा आप लोग बताइए, not tell me. For 3 which is the next greater element? 3 के लिए which is the next greater element? यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, सेम नहीं करता हूँ. कौन सा होगा? Exactly. So for 3 also it's 8. For 3 also it's 8 only. For 8 which is the next element? It's 9. Okay. Then for 1 which is the next element? For 1 again it's 9. अब देखो for 9 there is no next greater element. अब if there is no next greater element, it will be -1. Then for this 4, for 4 it's 6. And for this 6, which is the necessary element, again for 6 there is nothing after it, so it's -1. So this is how your answer array will look like.
So is the problem statement clear to everyone? Is the problem statement clear to all of you? बोलिए. I think many of you are little uh, back in the stream. आप लोग एक काम करो, जो लाइव वाला ऑप्शन उसमें क्लिक करो, या फिर इस स्ट्रीम को लीव करो, फिर से ज्वाइन कर लो. कभी कभी ऐसा डिले हो जाता है, ठीक है, बिकॉज द रिस्पॉन्सेज आर कमिंग वेरी लेट, तो माइट बी द रीजन. देखो, हाँ, दिस इज वन थिंग गैरी. सो द ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस विल बी, what will be the brute force approach? Brute force approach will be that for every index you will check its next index, that which is the is greater one, and whenever you get a greater index you will put the answer, right? But what will be the time complexity of this? So time complexity of that approach will be Gary order of n square, right? उसमें आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का टाइम लग जाएगा, उसमें आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का टाइम लग जाएगा, right? But right, but using stack you will be able to solve it in just order of n. Ab how and why stack? Abhinav, why are we solving this problem using stack? Why not something else? Dekho, why we are solving using stack is, there is one very important thing about this problem, that whenever, as I told you before also, जब भी हमें एक एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को निकालना होता है या उस पर डिपेंडेंट होते हैं हम, वहां पे मोस्टली केसेस में हम स्टैक का यूज करते हैं. जस्ट लाइक इन द parenthesis question, I have to check whether my current opening bracket has its closing bracket or not, right? And that was not just the immediate next one, it can be after some number of characters. Same here, यहां आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है जिसके बीच में कुछ और कैरेक्टर्स हो सकते हैं. अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि हमें यहाँ पे हम लोग पीछे से आइटरेट करेंगे. क्यों हम पीछे से आइटरेट करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट मी रिमूव दिस, या हम एक नया ले लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक ले लेंगे, वी विल टेक अ स्टैक. ओके, अब देखो होगा क्या, क्योंकि हमें एक नंबर के बाद उससे बड़ा कौन सा एलिमेंट है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, कि एक नंबर के बाद का कौन बड़ा एलिमेंट है, ठीक है. So to find the next greater element, how will we be able to find it? हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको, हम कैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं? तो उसको फाइंड करने के लिए पता है क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, टू फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम पीछे से आइटरेट करेंगे, सो दैट एक एलिमेंट के बाद कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम स्टोर करते जाएं. और सिंपली स्टोर नहीं करेंगे, देयर विल बी अ टेक्निक ऑफ स्टोरिंग. ठीक है, अब अच्छा मुझे इतना बताओ, तो हमें क्या करें, हम तो पहले एक स्टैक बना लेंगे और स्टैक के साथ में हम एक आंसर एरे बना लेंगे जो कि सेम साइज की होगी. तो दो चीजें मैं पहले कर देता हूं. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एन स्टैक एंड नेक्स्ट थिंग आई विल क्रिएट एन वेक्टर आंसर ऑफ द सेम साइज. तो मैं एरे का साइज यहां ले लेता हूं, आई विल टेक द साइज ऑफ द एरे and I will do like this. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अब व्हेन आई हैव द होल करंट एम्प्टी आंसर एरे एंड द स्टैक. अब देखो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक, एज आई टोल्ड यू, आई विल इटरेट फ्रॉम द बैक. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, व्हेन आई एम एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, अब इस 6 के लिए आंसर क्या होगा, बताओ इस 6 के लिए आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस 6? -1, right? -1. So basically, because there is nothing after this 6, answer is -1. Or we can say in a way that my stack is empty. So whenever the stack will be empty, my answer will be -1. Because stack empty means that there is no next greater element. I will let you know how. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, what I will do is I will go through all the elements and I will start from the back. As I told you, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड आई एम सेइंग इफ माय स्टैक इज एम्प्टी, इफ माय स्टैक साइज इज 0, व्हाट आई विल डू, I will say that
कि माई आंसर इज -1. दिस इज फाइन, दिस इज फाइन. इतना समझ में आ गया. बिकॉज जस्ट लाइक व्हेन माई आई वॉज हियर, माई स्टैक वॉज एम्प्टी, मीन्स देयर इज नथिंग इन द स्टैक, so my answer is -1. So my answer is -1. Now after this, when I will move to the next index, before moving, at the last I will insert this value in the stack. So what I will do, at the last in my stack I will push my current element AR or of I. ठीक है, तो क्या किया मैंने, what I did, in my stack I pushed my current element, this element 6. This I will put in my stack and I will move forward. Okay, अब see, अब I am currently at this 4. अब मुझे बताओ, क्या इस 4 के लिए आंसर -1 होगा? क्या इस 4 के लिए आंसर -1 होगा? नहीं होगा. इस 4 के लिए आंसर -1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस 4 के लिए इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है. और वो चीज आप कैसे निकालोगे? वो चीज आप निकालोगे अपने स्टैक के टॉप से. तो अगर स्टैक में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब आंसर -1 नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा? जो भी स्टैक का टॉप है. तो देखो आप, इस 4 के लिए स्टैक का टॉप 6 है और वो बड़ा भी है. हमें ग्रेटर निकालना है ना, तो 6 प्रेजेंट भी और 6 बड़ा भी है. अगर ये छोटा हो तो क्या करें, आगे समझते हैं. अभी के लिए समझ लो कि 4 था और 4 के लिए स्टैक हमने चेक किया, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो -1 तो नहीं होगा. और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वही एलिमेंट आपका हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो अगर स्टैक एम्प्टी था फिर तो -1 आ गया. बट इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन आंसर विल बी द स्टैक टॉप. देन आंसर विल बी द स्टैक टॉप. ठीक है, 1 मिनट. Okay, chalo, so this thing is also clear to everyone. Okay, this thing is also clear to all of you, right? तो ये हो गया and ये हो गया. ठीक है, now the next thing, the next part. अब मैंने कहा ठीक है अभिनव, when stack is empty I am saying answer -1, else I am saying the top of the stack is answer, and at the last I am putting my current element in the stack. जैसे यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो 4 है वो स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा. अब प्रॉब्लम आती है जब 9 आएगा. अब देखो, when the 9 came, अब for this 9 the thing is stack top is there but it cannot be the answer. अगर आप इस कोड के हिसाब से चलते हो फिर तो आपका स्टैक का टॉप आपका आंसर हो जाएगा, which is wrong actually, because 9 के लिए 4 cannot be the answer. अब क्या करेंगे हम? अब हम लोग एक लूप चलाएंगे. लूप क्या होगी कि while जब तक स्टैक का जो टॉप है वो करंट एलिमेंट से छोटा हो, इवन इक्वल भी हो, अगर, क्योंकि बड़ा होना चाहिए, छोटा या इक्वल है तो हम उसको पॉप कर देंगे. मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ही चेक कर लो ये चीज. क्या चेक कर लो कि अगर पहली बात तो स्टैक एम्प्टी ना हो, तो अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और जो स्टैक का टॉप है वो हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है, क्योंकि हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ा एलिमेंट, हमें चाहिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. बट अगर अभी स्टैक में छोटा एलिमेंट या इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको पॉप कर दो. और तब तक पॉप करो जब तक वो छोटा है, जब तक स्टैक छोटा है और जब तक स्टैक में एलिमेंट्स हैं आप पॉप करते जाओ. ठीक है, जैसे कि 9 के केस में क्या होगा, 4 क्या है, छोटा है, हटा दो. 6 क्या है, छोटा है, हटा दो. अब क्या हुआ, हमने 4 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया. अब आपका जो स्टैक है वो हो चुका है एम्प्टी. तो ये लूप तो रुक जाएगी. और अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग आंसर में? -1. तो अब 9 के लिए एज यू नो आंसर हो जाएगा -1. आंसर हो जाएगा -1. ठीक है, ठीक है, बढ़िया. अब देखो, अब लास्ट में 9 इंसर्ट हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब आया 1. अब इस 1 के लिए क्या करेंगे यार, इस 1 के लिए फिर स्टैक का टॉप देगा. अब देखो, अब स्टैक का टॉप छोटा नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली 1 के लिए आंसर हो गया 9. अब 1 इंसर्ट हो गया. अब आया 8. अब देखो 8 के लिए आप देखोगे जो स्टैक का टॉप है वो छोटा है,
तो क्या करेंगे, whenever stack top is less, just pop it. तो stack top will be popped out and now it will just popped out once. वो अब बड़ा है तो अब 9 हो जाएगा आंसर. Okay, now again go back and then this 8 will be inserted, right? At the last वो element insert जरूर होगा, always will be inserted. Okay, so for this 3 now, the top is 8, the top is 8, so great, put this 8 and move forward, and then 3 will be inserted, right? Wait, 3. For this 5, 3 is smaller, so remove it. Then 8 is greater, so put it. So this is how using this loop, your next greater value will be calculated, which you can return at the last. That's it. Does it make sense to everyone? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? Gary, others, everyone, guys. Does it make sense? Does this question make sense to everyone? Okay. So guys, does it make sense? Is this thing clear to everyone? That how are we solving this problem of next greater element? Any doubts? Hanji. डन हो गया, ग्रेट. ठीक है, अब देखो इस पहले तो हम दो काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट इन दिस प्रॉब्लम. आप लोग क्या लगता है, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम? व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? क्या लगता है आप लोगों को? देखो अब इसमें आप लोग सोचोगे अभिनव, यहाँ पे एक तो ये फॉर लूप है ऑर्डर ऑफ एन टाइम की, और ये वाइल लूप भी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी. बट ऐसा नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर मैं कोड लेता हूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज, देखो देखिए व्हाट विल हैपन, ये आपकी फॉर लूप है एंड दिस इज योर वाइल लूप एंड अदर इफिशिएंट, राइट? देखो this for loop is running order of n time, that I am sure. But if you will ask Abhinav how many times this while loop is running, so you will say Abhinav it is also running order of n times in worst case, so it will be overall n into n. But no, it's not n into n. The thing is, see what this while exactly happens, it will be order of n. How? See, so this while loop will run order of n times, but it will not run order of n times for every iteration of this for loop. वो overall order of n time चलेगी. What? Overall it will run order of n time. क्योंकि ये while loop क्या कर रही है, ये while loop आपके एलिमेंट्स को पॉप कर रही है. अब आपके
आपके एरे में सिर्फ n एलिमेंट्स हैं, तो सब मिला के भी वो सिर्फ n एलिमेंट्स को ही पॉप कर पाएगी. So this will run over of all n times, and this is also running n times. So overall it will be n plus n, which is ultimately order of n time complexity, and space complexity is also order of n. इसलिए मैंने बताया था कि जो उसका brute force तरीका होता है, brute force will take order of n square. There will be nested loop. It will give you TLE. Okay, but here this is order of n. Make sense? Does it make sense to everyone? पक्का? ठीक है, चलो, great. So let's move forward, guys. अब ये देखो नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट. So that was the next data element, and this is the second part of that question. The only difference in this part is that here we consider the array as a circular array. Means we find the next greater element in that circular array, not in that array. तो यहाँ पे आपकी एक circular array है apart from a simple array, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी array की बात करूं, if I will take this same array, ठीक है, और इस array में अगर आपसे बोलूं कि भाई assume it as a simple array, ठीक है, तो अगर हम सिंपल array बात करें तो आपका कोई इसके आंसर आ रहा था, आप सिर्फ भाई इसके 5 के लिए हो जाएगा 8, 3 के लिए हो जाएगा 8 के लिए हो जाएगा व्हाट 9, इसके लिए 9, इसके लिए -1, इसके लिए 6, इसके लिए -1. बट अगर ये एक सर्कुलर एरे बन जाए, इफ इट विल बिकम अ सर्कुलर एरे, तो आप बताइए 6 के लिए आंसर क्या होगा. मतलब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, 6 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, बट अगर सर्कुलर एरे बन जाएगी तो आई विल से कि 6 के बाद 5 है, 3 है, 8 है, सर्कुलर एरे में चल रहे हैं, राइट. तो इफ इट्स अ सर्कुलर एरे, सो व्हिच एलिमेंट विल कम आफ्टर 6? कैन एनीवन टेल मी? हाँ जी, देखो अगर ये एक सर्कुलर एरे बन जाए ना, so in case of the circular array, exactly the next element of 6 will be, so next is 5, but I'm saying next greater element, so next greater element will be others 8, right? 8 will be the next greater element. तो अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो I will do a very small change in my code to use the same code for this array. देखो इस कोड में क्या था, इस कोड में क्या था कि हमारे पास सिंगल एरे थी, but now we have to consider it as a circular array. Okay, you know what I will do? We will do one basic thing. Instead of this single vector, what I will do is I will make this vector duplicate and will push it in the same. तो मैंने same vector को duplicate कर दिया. Vector was 5 3 8 1 9 4 6. I added one more time 5 3 8 4 1 9 6 in the same vector. Okay. Now what I will do? Now for this given vector, I will find its next greater element. Why I'm doing this? Because when I'm repeating the vector, so this particular part of the loop will work as the circular array. Sorry. So for example, 5, it will be 8 only, 3, it will be 8 only, 8, it will be 9 only, 1, it will be 9 only, 9, it will be again -1, because for 9, there is no greater element, 4, it will be 6, and for this 6, it will not be -1, it will be 8. Then again, for 5, it will be 8, 3, it will be 8, 8, it will be 9, 1, it will be 9, 9, it will be -1 again, 4, 6, and -1. So now if you will see this much part of this array, this is what
we were looking for. This is what we were looking for, right? तो पहले मैं अरे को डबल कर दूंगा, उसके लिए सेम अप्रोच लगाएंगे और फिर उस डबल वाले आंसर से हम सिर्फ पहले के n एलिमेंट्स निकाल लेंगे. दैट विल बी आवर आंसर. Does it make sense to everyone? Does it make sense to everyone? Okay, okay. तो क्या करेंगे? देखो, first of all, take the same question, this exactly same function which we used in the previous question. Okay, and I will put it here. Let's change the name because both are the same name. Now, this array that is given to us, what I will do, I will insert. So one thing is different here. They are having long, so we will also have long. Maybe there can be very large elements, so we will not take the risk. That's it. Okay. So first, what I will do, I will push the same elements in the array again. So in my given array, I am pushing back my elements again. Okay. So what will happen? This is n, right? So what will happen? That I will push same n elements in my array again. So my array will get repeated like this. Okay. Now for this array, I will ask you to give me the answer. So I will take my answer vector and I will call this function for this array which has got double. तो array आपकी double हो चुकी है. So it will give you the answer also of this double length, this length. But from those whole answer, you just need the first n elements. So maybe this is the, so maybe we will take one more vector. Let's say the vector result, where you will just push the first n elements of the answer and then return it. ठीक है? That's it. And it will be done. So same ही था. If you see, logic was same. With here for rotated, making the array rotated, we just add it once more at the last, and that's it. It's done. Okay. Okay. So this is the thing. This is the thing that we are actually solving here. Does it make sense to everyone? Does it make sense to everyone? Is this question clear to all of you? Right? Great. So, and guys, this logic of next greater element is very important. Okay, is very important. So, abhi in the remaining class also, whatever questions we will solve, many of those questions we will use the same logic. What this code, the code for this circular one, others, code for this one you are saying? Code for this one? देखो, what I'm doing. See, so they will give us the array like this. It's a basic code here. If you will do Dragon, you will understand. But okay, still I am explaining. 5, 3, 8, 1, 9, 4, 6, 5, 3. So हमें जो array दे रखी थी initially, it is this one, and you have the length of this array. Okay. So what I was saying is कि you are having the array like this. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इसी array में सेम array को फिर से पुश बैक कर दो. तो इस array में इस array के सारे एलिमेंट जितने भी n एलिमेंट्स थे उन सबको मैंने पुश बैक कर दिया. तो सेम एलिमेंट्स इस array में एक बार फिर से ऐड हो गए. तो क्या हुआ? इसी में आगे 5, 3, 8, 1, 9, 4, 6 फिर से ऐड हो गया. ठीक है, ठीक है. अब मैंने इस नई array के लिए इस फंक्शन को कॉल कर दिया. कौन सा फंक्शन? जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था.
सेम लॉजिक, उसको मैंने कॉल कर दिया, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे एक आंसर वेक्टर देगा जिसमें कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर होंगे। तो अब इस फंक्शन ने मुझे इस एरे के लिए आंसर वेक्टर दिया, 5 का हो जाएगा 8 8 9 9 -1 6 8, तो इस 6 के लिए 8 हो गया, देन 8 8 9 9 -1 6 -1। तो हमें यहाँ से इस वाले फंक्शन से हमें ये आंसर मिल गया जो कि इस पूरे एरे के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर स्टोर करे। बट हमें तो सिर्फ पहला इतना चाहिए, हमारा आंसर सिर्फ इतना है, इतना पार्ट, हमें बाकी से मतलब नहीं था, वो तो हमने लॉजिक के लिए रिपीट किया था। तो अब इस आंसर एरे में से मैं पहले के n एलिमेंट्स निकाल लूंगा और उन्हें एक रिजल्ट एरे में स्टोर कर दूंगा। तो इस आंसर एरे से इस रिजल्ट एरे में हम पहले के n एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में 8 8 9 9 -1 6 और 8 आ गया, ठीक है। int n id size of array, so others n इस एरे का साइज था, ठीक है। बट जब ये एरे यहाँ पे जा रही है ना इस नए फंक्शन में, तो यहाँ हम n नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ हम उसका साइज फिर से निकाल रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए उसका साइज डबल हो गया होगा इस फंक्शन के लिए, बट इस फंक्शन में उसका साइज सेम ही रहेगा जो कि n दिया गया था, ठीक है। तो बोथ फंक्शन हैव देयर ओन n, इस फंक्शन का जो n है वो है डबल हुई लेंथ का साइज, इसीलिए वो उतना ही बड़ा आंसर भेज रहा है। यहां पे उसका साइज सेम है जो आपको दिया गया था, समझे बात को, ठीक है, मेक सेंस, गॉट इट, ग्रेट। ठीक गाइस, so let's do one thing guys, I think it's more than 2 hours, so let's also have a small break, okay? You guys can also have your dinner, whatever, tea, coffee you guys need. Let's take a break of 10 to 12 minutes because we have more 2 hours to left. तो हमारी क्लास पूरी 11 बजे तक चलेगी, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले एक छोटा सा 10-12 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। इन दैट ब्रेक वट एवर थिंग्स वी हैव डन टिल नाउ, प्लीज गो थ्रू इट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है। और if you have any doubt please ask me, okay, and we'll be moving forward. इस ब्रेक के बाद में हम थोड़े और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड विल हैव सम मोर प्रैक्टिस ऑफ स्टैक, ठीक है। चलो बढ़िया, सो गिव मी 1 minute, लेट मी जस्ट put the banner here.
Uh, Hello guys, can we continue? Should we continue? Are you guys there? Hi others, Surya, Gary, Shivani, Simangi, Sarat, Akali. Are you all there? ओके नाइस आदर्श नाइस ठीक है तो यार चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं ठीक है लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम राइट सो ये प्रॉब्लम क्या है यार दिस प्रॉब्लम सेज दैट द स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बेसिकली एट द लास्ट हाई डीएस हाउ आर यू I think your name was something Ujjwal or right if I remember right so huh so what I'm saying is, give me 1 minute. My phone is not charged. Let me put it for charging. Great. Okay. So what I'm saying is, in this problem, the problem name is stock span problem. Okay. Let's see what the problem says. The problem says that stock span is a financial problem where we have a series of daily price quotes. Yeah, I'm also good DS. Price quotes for a stock, and we need to calculate stock span of stock price for all days, right? For all days. The array ARR of stock given I do a number of just before the given day for which stock price is less than or equal to its on the current day. Okay. अब देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपको एक स्टॉक का स्टॉक स्पैन बताना है स्टॉक स्पैन मतलब क्या होता है कि वो जो स्टॉक है आप उसको कितने दिन मतलब उसके पहले कितने ऐसे स्टॉक्स थे उसके पहले के कितने ऐसे स्टॉक्स थे जो उससे छोटे थे वो आपको बताना या आपको वो स्टॉक बताना है जो उसके पहले का उससे बड़ा स्टॉक था दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल ठीक है तो लाइक यू कैन से दिस इन मल्टीपल थिंग्स मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं ठीक है कि प्रॉब्लम क्या है सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सी तो आप देखो अगर आपकी एरे कुछ इस तरीके से दे रखी है योर एरे इज लाइक दिस Abhinav sir, your explanation is very good. Glad to have you. Yeah, thanks a lot, Surya. Okay. So the array is let's say 100. Okay. Then it's 80. Then it's 60, 70, 60, 75, and 85. Okay, 85. अब देखो अब I will also put the indexing here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब स्टॉक स्पैन क्या है व्हाट इज स्टॉक स्पैन So according to them, stock span is the number of stocks before it which are less than equal to the current stock. Less than equal to the current stock. जैसे देखो अब इस 100 के लिए ऐसे कितने स्टॉक्स हैं इससे या इसके पहले तक जो इससे छोटे हैं तो अब देखो इस 100 के लिए 1 मिनट
Okay, sorry guys, got an important call. Yeah, so ठीक है. सो ठीक है, अब आप बताओ मुझे 100 के लिए ऐसे कितने स्टॉक से 100 है उसके पहले जिनकी वैल्यू उससे लेस या इक्वल है. जैसे इस 100 के लिए आप देखो सिर्फ 100 है, बाकी उसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1. अब इस 80 के लिए बताओ कौन से ऐसे स्टॉक है जिनकी वैल्यू उससे छोटी या इक्वल है. वो भी कोई नहीं है, सिर्फ 80 है. ठीक है. अब आप इस 60 के लिए बताओ, इस 60 के लिए कौन से ऐसे स्टॉक है इसके पहले जिनकी वैल्यू उससे छोटी है या इक्वल है. अब 60 के लिए भी कोई भी नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा 1. ये खुद है. ठीक है. अब इस 70 के लिए बताओ, 70 के लिए इससे और इसके पहले ऐसे कितने स्टॉक है जिनकी वैल्यू 70 के इक्वल या 70 से कम है. अब बताओ आप लोग, टेल मी नाउ. आई एम आस्किंग स्मॉल सूर्या, बड़ी नहीं, स्मॉल. तो स्मॉल इज 17 एग्जैक्टली डी है, सो इट विल बी 2. 60 के लिए कितना है? अरे वो 60 के लिए दिस इज देयर, बट आई डू नॉट हैव टू कंसीडर दिस. जस्ट पीछे देखना, सच पीछे 70 है जो कि बड़ा है, जस्ट पीछे 70 है जो कि बड़ा है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो इट्स अगेन 1. ठीक है. अब 75 के लिए क्या होगा? 75 के लिए यू कैन सी 60 is also smaller, 70 and 60. So these all four are less than greater, so it will be 4. And for 85, these all are smaller, so it will be 6. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था ना हमारा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसी का एक वर्जन है. अगर मैं इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से देखूं, अगर मैं ये बोलूं कि आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर के लिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे थे, यहां आपको हर एक नंबर के लिए उसका प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालना है. क्या करना है आपको? हर एक नंबर के लिए, गाइस प्लीज लाइक कर दो जिसमें ना किया हो, आपको हर एक नंबर के लिए उसका प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालना है. ठीक है. जैसे कि इस 100 के लिए क्या होगा? इस 100 के लिए इसका जो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके पीछे ग्रेटर है ही नहीं. तो क्या करेंगे? तो हो जाएगा आंसर 1. ठीक है. अब इस 80 के लिए क्या होगा? 80 के लिए इसका बगल वाला इससे ग्रेटर है, तो कितना डिफरेंस हुआ? इंडेक्स का डिफरेंस कितना हुआ? 1 हुआ, तो 80 के लिए आंसर 1 हो जाएगा. 60 के लिए प्रीवियस ग्रेटर कौन सा है? 80 है, तो इसके लिए भी आंसर 1 हो जाएगा. 70 के लिए इसका प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 80 था, 60 ग्रेटर नहीं था, तो 2 का डिफरेंस आ गया इंडेक्सेस में, तो आंसर 2 हो जाएगा. 60 के लिए अगला ही वाला है, तो आंसर 1 हो जाएगा. 75 के लिए ये वाला है, तो आंसर 4 हो जाएगा. और 85 के लिए यहां पर है, तो डिफरेंस हो गया 6, तो आंसर 6 हो जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं हर एक नंबर के लिए उसके प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स निकाल लूं और उस करंट नंबर के इंडेक्स से माइनस कर दूं, तो आपका आंसर आ जाएगा. एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? Yes or no, guys? Tell me. Guys? Yes? Okay. Great. Now, Abhinav, how can we find the previous greater element? So see, finding previous greater element is exactly similar how we find the next greater element. Just the difference will be that for finding the next greater element, we started loop from the back. Here I will start my loop from front only. And see, here I have to not directly check the next greater element or previous greater element. Here I need to find the index of that. Because let's say for this 75, its previous greater element was 80. So I need to get the index of 80. And when I will subtract the index of 8, 5 and 1, I will get 4. So its index to be subtracted from the previous greater element. This is what we have to do. ये हमें यहाँ पर करना है. ठीक है.
अब देखो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स टेक दिस एरे, here, okay, let's take it here. I will get this array. This is index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. And I will take a stack. I will take a stack. Okay. अब देखो क्या करेंगे हम लोग, तो बेसिकली फॉर इफ देर इज अ एलिमेंट फॉर विच देर इज नो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, फॉर दैट आंसर विल ऑलवेज बी 1. जैसे कि आपको याद होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या करते थे, व्हेन देयर वाज अ एलिमेंट विद नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वी पुट -1, राइट. यहाँ पे 1 हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रंट and you can see for this 100 there is no previous greater element, so answer will be 1 only. ठीक है. And then after that what we do, we insert this 100 in the stack, but this time I will not insert 100, this time I will insert index 0. So 0 index means the value 100 but the index 0 is inserted, तो वो मैं ब्रैकेट में लिख दिया है, insert to 0 ही होगा. For our understanding I have put 100 also there, right, I have put 100 also there. ठीक है, ठीक है, राइट. अब देखो, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड here. Now for this 80 what we do, I will first see that if in my stack is there any greater element. तो बताओ मुझे क्या स्टैक के टॉप में 80 से बड़ा एलिमेंट है, तो वहां पे एक इंडेक्स है और इंडेक्स तुम एलिमेंट निकाल लेंगे, तो क्या स्टैक के टॉप में 80 से बड़ा एलिमेंट है, यस है. तो अगर बड़ा एलिमेंट है तो क्या करेंगे, तो 80 के जो इंडेक्स है मतलब करंट इंडेक्स 1 और जो टॉप पे स्टैक पे उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इट विल बी 0, इट विल बी 1 - 0 1, तो 80 के लिए भी आंसर हो जाएगा 1. और फिर हम इस 80 को उस मतलब उसके इंडेक्स को इंसर्ट कर देंगे. ठीक है. अब आगे बढ़े, अब आया 60. 60 में भी क्या हुआ कि जो भी स्टैक के टॉप पे था वो उससे बड़ा था, तो 20 - 1 अगेन 1 हो गया, और अब हमने 60 को भी इंसर्ट कर दिया. ठीक है. अब हम बढ़े आगे, अब आया 70. अब जब 70 आया यार, जब 70 आया यार, तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा भाई 70 के लिए क्या स्टैक के टॉप पे 70 से बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, बताओ, आप लोग बताओ, क्या स्टैक के टॉप पे 70 से बड़ा एलिमेंट, इज एलिमेंट ग्रेटर देन 70 इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, यस और नो. नो, राइट. So it's 60. वैसे तो इंडेक्स 2 होगा, but I will get the element 60. If it is smaller, what we do? Just like in the previous question, we will pop it. Okay. Now what I will do? Now I will say कि okay. अब now is this greater? हाँ, अब greater है. तो if it's greater now, again find the difference of the index. So it's 3, it's 1. Index number 3, index number 1. Okay. So 3 - 1 is 2. That's it. Now move forward. Exactly. Check again. Okay. Now 70 will be inserted. Now for this 60, what will be the case? So for this 60, do we have greater element at the top? Yes. So difference is 4 - 3, 1 only. 1 only. Again move forward and 60 will also be inserted. So 4, 60. अब देखो, अब for this 75, we need a greater element. अब देखो, is 60 greater? No, remove it. Is 70 greater? No, remove it. Is 80 greater? Yes. So now it's 80, which is greater. So in difference between index is 5 - 1, 4. And now this will also be inserted 575.
and then finally I will move forward. It's 85, so the volt is 85. This will also go. This will also go. And now finally this is again greater. So it will be 6. 6 minus 0, 6. Okay? Okay. हाँ भाई. Sorry guys. Yeah. ठीक है, बात समझ में आई? सो डिड यू गाइस गॉट कि कैसे आपका आंसर आ रहा है? सो क्लियर है हाउ द आंसर इज कमिंग गाइस? पक्का? DS, Adarsh, Surya, are you guys getting? And this was your answer, right? ये तो आपको निकालना था. 1112146. So 1112146. Right? So उसको implement करते हैं. ठीक है? तो for implementation also I will again dry run for implementation. Okay? So first thing is I will take a answer vector here that will be of same size, and I will take a stack, an empty stack initially. Right? तो कैसे होगा ये काम? देखो, हम एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं और एक स्टैक ले लेते हैं. पहले तो हमने लिया एक साइज, एरे का साइज, और एक आंसर वेक्टर सेम साइज का, और क्या करेंगे हम लोग कि एक स्टैक ले लेंगे. ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आगे से इटरेट करेंगे 0 से लेके n तक. ठीक है? तो जैसे यहाँ पे हमारा i इंडेक्स यहाँ पर है. ठीक है? i इज हियर. ठीक है? i हमारा यहाँ पर है. एक मिनट, दिस इज i. ओके, अब देखो अगर हमारा i यहाँ पर है, आई विल सी द टॉप ऑफ द स्टैक. अब देखो स्टैक एम्प्टी है, तो इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगेन अगर आपका स्टैक का साइज 0 है, एम्प्टी है, तो वी नो आंसर विल बिकम जस्ट 1. मींस देयर इज नो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, सो आंसर विल ऑलवेज बी 1. ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा? एक मिनट. नो, आंसर विल नॉट बी 1. आंसर विल एक्चुअली बी I. Why I will tell you. This was a trap here. देखो आई क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि मान लो अगर हमारे एलिमेंट कुछ ऐसे हुए 10 20 30. अब फॉर दिस 10 20 30 फर्स्ट 10 विल बी इंसल्टेड. ओके, अब फॉर 20 मतलब 0 विल बी इंसल्टेड, राइट? इट इज 0 1 2. तो फर्स्ट 0 10 विल बी इंसल्टेड, एंड फॉर 0 10 इट विल बी सिंपली 1, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है, राइट? अब for this 20 what will happen, because the top is smaller, so again it will be removed. अब देखो, अब for this 20 also the stack is empty. मतलब 20 के पहले कोई भी बड़ा एलिमेंट्स नहीं है, सारे छोटे ही एलिमेंट्स हैं. और कितने एलिमेंट्स है 20 के नहीं पहले? अब देखो 2 एलिमेंट्स हैं, तो इस 20 के लिए आंसर हो जाएगा 2, विच इज i plus 1. सेम 20 इंसर्ट हुआ, एंड 30 के 20 छोटा है, तो 20 भी चला जाएगा. तो 30 के लिए भी आपका स्टैक एम्प्टी हो गया. तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया मतलब कि सारे ही छोटे हैं 30 के पहले, तो 30 के लिए आंसर हो जाएगा 3. तो आप लोग समझे कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो आंसर हो रहा है i plus 1, मतलब सारे ही एलिमेंट उस इंडेक्स और उसके पहले के. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? पक्का? ठीक है?
अब देखो अगर एम्पिटी नहीं है, अगर एम्पिटी जैसे कि क्या होगा, अगर मैं हम लोग सेम एग्जांपल ले लें, इफ वी टेक द सेम एग्जांपल ओके, इफ वी टेक द सेम एग्जांपल, तो जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक है, अब फॉर 100 इट वाज एम्पिटी, तो फॉर 100 इट बिकेम I plus 1 which is just 1, and then at the last what I will do, at the last in that stack I will push that I, okay. So means what will happen key, sorry, 1 minute, here I will insert 0, okay, I will insert 0 which is having the element 100, right, and as I said it will be empty, it will be I plus 1. Now I will move forward, now I will go here. Now for this 80 you can see the top of the stack is greater, the top of the stack is greater. So if it is greater, then what we will do, so if top of the stack is greater, I will say okay, this 100 is greater, which is the previous element. Now you have to find the difference between the index of this one and this top. So your answer will be difference between the current element and difference and the element or the index present at stack top. That will be your answer. Like in this case, it will be 1 minus 0. And then again, that 1 will also be added. And then I will move forward. So this 1 will also be added. Up for this 60 again, this is also greater. So it will be 1 and 260 will be added. Up for this 70, here comes that the top is smaller. So now that loop will be there. What loop? Loop will be that while stack size is greater than 0 and अब यहाँ पे stack does not contain direct value. I will say if answer of stack top is less than equal to the current index, if answer of current top is less than equal to current index, जैसे कि यहाँ पे क्या है, it is less, right, oh sorry, not answer, array of, then what you will do, then you will say क्योंकि अगर ये इससे छोटा है तो इसको हटा दो, जब तक छोटा हो, अभी भी छोटा है अब नहीं है, जब छोटा तो पॉप कर दो, एंड जैसे ही बड़ा आया तो क्या करना है, तो डिफरेंस निकालना है, तो ये ट्रू है, ये 1 है, 2 हो गया, और अब ये इंसर्ट हो गया। अब 60 के लिए तो 70 बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 के लिए भी क्या हुआ, 4 माइनस 3 1 आ गया, और फिर 60 इंसर्ट हो गया। अब इस 75 के लिए क्या होगा, 75 के लिए 60 भी जाएगा और 70 भी जाएगा, तो 80 इज देयर, सो मींस 5 माइनस 1 4 हो गया, and then this 575 will go, and finally it will come here. Now here it's 85, okay, so 75 is smaller, remove it, 80 is smaller, remove it, final 100 is there, index number 0, 6 minus 0 is 6, that's it, okay, that's it. So this is how you can see guys, this is how you are getting your question, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड फाइनली माय आंसर आई विल रिटर्न। Does it make sense? क्लियर है गाइस? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं क्या? DS, others, everyone, Surya, is it clear? Is it clear? Great, great. So let's move to the next question. So guys, the next question now is trapping rainwater. This is a really good problem. It's a hard problem. It's a very famous problem with the name trapping rainwater. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है, गिव मी 1 minute.
अब देखो प्रॉब्लम क्या है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. गिवन एन array ARR with non-negative integers representing the height of blocks, if the width of each block is 1, compute how much water can be tracked between the block during the rainy season. So basically, if there is something like this given to you, there are some blocks given to you. So between these blocks, there can be some water that can be trapped. So you have to find out how much amount of water can be tracked in a block, right? अब मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं. How can we do this thing? This I will tell you guys actually. And यहाँ पे so देखो there are multiple ways of solving this problem actually. There are multiple ways जिससे हम प्रॉब्लम को solve कर सकते हैं. But we will be using the problem, okay, which is during stack. I worked on this problem last time. I studied it. I wanted to understand this one. Sure, DS, and I definitely I guarantee you will understand this time. Okay, okay, yeah. So, but yeah, as I said, there are multiple ways of solving this problem. You can explore all the other ways also. But today we will discuss the stack way of solving this problem. That how we can solve this problem using stacks. वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है. दैट वी विल अंडरस्टैंड एंड डिस्कस नाउ, ठीक है. चलो ये बढ़िया है, तो देखते हैं. तो अब लेट्स टेक द सेम. ओके, वेट, सो लेट्स टेक दिस सेम image. Okay, let's take this same image, and if you will see, the array in that image is like this. So it is having the value 0, no, not 0, starting from 3, then 0, then 1, then 0, then 4, then 0, then 2. So you will see you are having the height of every pillar or whatever, of every block, ठीक है. So you are having height of every block, ठीक है. So if you will see, this first block is having a height of 3. So this thing, this is having 0. So there is no block present here. This is 1, there is 1 block. This is 0, there is no block. This is 4. Okay, this is 4. Nice, nice. This is 0 and this is 2. Okay, so this is the array that is given to you. You can see here also. आपको यही array यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो आई होप इतना बात आपको समझ में आ गई होगी. ओके, अब देखो, आप अगर आपसे बोला जाए आपको कैसे निकालोगे कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कितने हाइट का पानी स्टोर हो सकता है, तो अगर आप इस पहले ब्लॉक में देखो, यार लेट मी सिट इन अ बेटर वे. हाँ, तो अगर आप इस फर्स्ट ब्लॉक में देखो तो उसमें बिल्कुल ही पानी नहीं स्टोर हो सकता. क्यों नहीं स्टोर हो सकता इस फर्स्ट ब्लॉक में पानी? बिकॉज इस फर्स्ट ब्लॉक में क्या है ना कि 3 ब्लॉक है. अगर आप पानी भरना ट्राई करोगे तो ना तो इस तरफ कोई सपोर्ट है, ना तो इस तरफ कोई सपोर्ट है. मतलब इस तरफ सपोर्ट, अगर आप इधर देखो इधर सपोर्ट है, आपका पानी भर सकते थे यहां पर, बट इधर गिर जाएगा. तो दोनों तरफ सपोर्ट होना चाहिए, मतलब नहीं भरता, ठीक है. अब इस वाले केस में वो क्या है, सेकंड वाले केस में यहां पर क्या है कि आपका पूरा 0 से है. तो इस तरफ 3 साइज का सपोर्ट है यहां तक, और इस तरफ आप देखो तो आपको 4 साइज का सपोर्ट मिल रहा था. बट आप तो 4 तक नहीं भर सकते, इधर तो गिर जाएगा ना. तो आपने यहाँ पे 3 साइज तक का पानी भर दिया. तो इस वाले ब्लॉक में क्या हुआ कि 3 साइज का पानी आ गया. इस ब्लॉक में आप देखो इधर 4 का सपोर्ट था, इधर 3 का सपोर्ट था, तो इधर भी 3 तक का. अब 3 तक में क्या है, पानी 3 तक का भर सकते हैं, मतलब लेवल 3 तक, बट उसमें एक आपका ब्लॉक भी तो बचा है नीचे. तो मतलब 2 लेवल का पानी यहाँ पे आ गया. यहाँ पे अगेन ये पूरा 0 था, यहाँ पे अगेन 3 लेवल का पानी आ गया. अब इस ब्लॉक के लिए आप देखो, इस ब्लॉक के लिए इसके इधर कोई सपोर्ट नहीं, इसके इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो मतलब 0 हो जाएगा. यहाँ भी इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे 4 का सपोर्ट है, इधर 2 का सपोर्ट है, तो 2 तक पानी भरेंगे, क्योंकि जितना मिनिमम होगा सपोर्ट उतना ही भरते हैं, राइट. तो 2 तक पानी आ गया, और यहाँ पहले से कुछ भी नहीं था, तो पूरा 2 का पानी आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 का आया है, यहाँ 2 का पानी आ जाएगा. और यहाँ पे अगेन कुछ नहीं, क्योंकि एक तरफ तो भाई कुछ है ही नहीं इधर,
समझे बात को? तो अगर आप सबका सम निकालते हो तो क्या आएगा, 0 + 3 + ओके 0 + 3 + 2 + 3 + 0 + 2 + 0, तो टोटल हो गया तुम्हारा 10, और 10 तुम्हारा इस वाले केस के लिए जो है आंसर हो जाएगा। यू कैन सी। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो सबको क्लियर है? अच्छा, कोई बताया कि इस क्वेश्चन को जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हमने इसका जस्ट पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मान लो, या फिर बेसिकली जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम का मिक्स है। आप लोग सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमने स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम में किया और जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में किया, उसका मिक्स आएगा। आपको बताएगा कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, बताइए, टेल मी। हाँ जी, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लेट मी टेल यू क्या करेंगे हम लोग। अगर मैं यहां से हटा दूं, आप क्या करो, आप हर एक नंबर के लिए 2 एरे बनाओ। पहली एरे बनाओ हर एक नंबर का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल, क्या करने के लिए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। हाँ मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ डीएस क्या करेंगे। आप हर एक नंबर का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालो, हर एक नंबर का। बेसिकली इसमें यार लॉजिक क्या है कि देखो, एक ब्लॉक, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो एक ब्लॉक में उतना ही पानी भर सकता है जितना पानी उसके पिछले वाले ग्रेटर एलिमेंट और उसके बाद के ग्रेटर एलिमेंट में होगा। जितना पानी वो भर सकते हैं उतना ही इसमें भरा जा सकता है। अच्छा नहीं वेट, इसमें नेक्स्ट ग्रेटर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें। बेसिकली और बड़ा हुआ तो हम और बड़ा भी जा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अगर हम ट्राई करें ना तो हम इस प्रॉब्लम को बिना स्टैक के भी कर सकते हैं, और आई थिंक इसका जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका प्रीफिक्स सम वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में प्रीफिक्स सम पढ़ा था, बट हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो मिक्स हो जाएगा, और मे बी हम इसको प्रीफिक्स सम से समझेंगे, और जो स्टैक है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेटर नहीं, आप एक काम करो, अगर आप देखो एक चीज, मान लो मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है, तो इस ब्लॉक में आप देखो तो हाइट 3 तक पानी भरा जा रहा है। क्या हो रहा है, इस ब्लॉक में हाइट 3 तक का पानी भरा जा रहा है, ये बात क्लियर है। अब देखो हाइट 3 तक भरा जा रहा है पानी इस ब्लॉक में, तो क्या क्यों ऐसा भरा जा रहा है, मतलब 4 तक क्यों नहीं भरा जा रहा है, या 2 तक क्यों नहीं भर रहा है, 3 तक ही क्यों भर रहा है? उसका एक रीजन है, क्योंकि इस ब्लॉक के पहले का जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो था 3, और इसके बाद का जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो था 4। अब मान लो आपसे बोलो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक तरफ 3 साइज है, एक तरफ 4 साइज है, तो इस कंटेनर में कितना पानी भरेगा? अगर ये 3 है ये 4 है, तो आप बोलोगे 3 भरेगा, क्योंकि जब 4 भरने जाएंगे तो गिर जाएगा। सेम है, आप देखो तो ये एक तरीके से एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें इधर 3 है इधर 4 है, तो कितना भरेगा पानी? 3 भरेगा। इतना समझे आप लोग? क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, यस और नो? तो यहां भी क्या हो रहा है, मान लो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो ये था जिसकी हाइट 3 थी, और इसके राइट साइड में सबसे बड़ा ब्लॉक ये था जिसकी हाइट 4 थी। इससे बड़ा कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इसके ब्लॉक्स हैं, इसके लेफ्ट और राइट साइड के, तो जो इनका मिनिमम होगा, मतलब जो लेफ्ट का मिनिमम होगा, जो लेफ्ट का लार्जर ब्लॉक होगा उसका जो मिनिमम होगा, और राइट का लार्जर ब्लॉक जो होगा उसका जो मिनिमम होगा, उतना पानी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक पे तुम 3 लेवल तक का पानी स्टोर कर सकते हो।
बट उस 3 लेवल तक में एक लेवल तो इस ब्लॉक का भी है ना, एक लेवल, तो ये जो एरे होगा ना हम उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमें निकालना होगा कि एक ith ब्लॉक में कितना पानी स्टोर हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, उसके राइट का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, और उन दोनों का मिनिमम निकालेंगे कि उतना पानी स्टोर हो सकता है, और उसमें से जो इंडेक्स है एरे की, जो एलिमेंट था 1, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई 2 तक का एलिमेंट स्टोर हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है डीएस, आदर्श, गाइस, एवरीवन? तो ये अप्रोच क्लियर है कि नहीं, ये अप्रोच क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब इसको करेंगे प्रीफिक्स सम से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग भाई पहले इस एरे में हर एलिमेंट के पहले कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट था वो निकालेंगे। सो यू विल फाइंड द प्रीफिक्स मैक्सिमम। आई विल गो ऑन and I will store the maximum element of a particular element. So let's say for example for this I will take my left and right. दो array होंगी. Left array will store the maximum on the left of the array and right will store the right of the array. So till here the maximum is 3. Till here it's again 3. Till here it's again 3, 3. अब यहाँ पर हो गया maximum 4 और यहाँ भी आ गया 4. तो इस तरीके से हम लोग हर एक इंडेक्स की जो प्रीफिक्स एरे है उसका मैक्सिमम स्टोर का, आप लाइट में आप लोगों को ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड से लिख देता हूँ। तो ये 3, ये भी है 3, 3, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूं, अच्छा ये भी तो है कुछ 2, तो ये जाएगा 4। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इट विल बी 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4। तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक इंडेक्स के लिए उसके बाद का कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है और उसके पहले ही कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हम निकाल पा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि हम हर एक इंडेक्स के लिए उसके पिछले मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी वो निकाल लेंगे लेफ्ट एरे में, और उसके बाद की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी वो हम निकालेंगे राइट एरे में। लेफ्ट के हम लोग निकालेंगे प्रीफिक्स मैक्स, राइट में निकालेंगे सफिक्स मैक्स। इज इट क्लियर गुरुवा, डीएस, आदर्श? ठीक है। अब मुझे इन दोनों में से इनका मिनिमम निकालना है। अब मुझे निकालना है कि भाई मिनिमम ऑफ लेफ्ट हैंड, और ये सारी चीजें हर एक इंडेक्स के लिए हो रही हैं, फॉर एवरी इंडेक्स वी आर डूइंग, ठीक है। जैसे इसके लिए मिनिमम क्या होगा 3, इसके लिए भी 3, 3, 3, 4, 2, 2, राइट। तो फॉर एवरी इंडेक्स आई एम फाइंडिंग द मिनिमम। मिनिमम मतलब कि कितने लेवल तक का पानी भर सकते हो। अब देखो इसमें 3 तक पानी भरेगा, इसमें भी 3 तक भरेगा, इसमें 3 तक, 3 तक, 3 तक, 3 तक, इसमें 2 तक, तो आपको मिल गया। अब इस लेवल में कुछ लेवल उस ब्लॉक का होगा, तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इस ब्लॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ब्लॉक ऐसे 3 से क्या हुआ, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 0, और फाइनली वी विल डू द सम ऑफ ऑल, सो आंसर विल बी 10 विच इज द आंसर। सो समझ आ रहा है, सब इजी लग रही है? एग्जैक्ट इजी है प्रॉब्लम यार, डीएस इजी प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है। So we can use PG and G, right? I'm not sure what is PG and G. Even I don't know. So अगर किसी एल्गोरिथम का नाम है तो मुझे नहीं पता यार, मुझे एल्गोरिथम का नाम नहीं याद रहता, मुझे कॉन्सेप्ट याद रहता है बस। तो बट हाँ, करना यही है, ठीक है, कि पहले हमें लेफ्ट प्रीफिक्स मैक्स निकाल के लेफ्ट एरे बनानी है, राइट प्रीफिक्स मैक्स निकाल के राइट एरे बनानी है, और फिर मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट लेके उसमें करंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, चलो तो अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। हाउ वी विल सॉल्व इट, लेट्स सी दैट सॉल्व कैसे करेंगे। सो फर्स्ट आई विल फाइंड द लेंथ, ठीक है। देन आई विल फर्स्ट टेक अ लेफ्ट एरे एंड द राइट एरे, both of length n, both of length n, ठीक है। अब देखो फॉर दिस लेफ्ट एरे
its zeroth index will be 0. Like for this left array, its zeroth index will be same, and for this right array, its last index will be same, because we can use that, Gurva, but I wanted to take a new approach. Using stack, it's your homework. So it's your homework. So we are learning stack, right? So now it's your homework that you have to solve this problem using stack. Take it as an assignment. I've told you one way, you have to do it using another way, using stack, right? हाँ, अभी कैसे करेंगे कि now for left, अब जीरो तक का मैक्सिमम तो जीरो ही रहता है, राइट? एंड हम पीछे से आएंगे, सो राइट ऑफ n minus will be the last element only. So that will be the case, right? तो यहाँ से जब आई ट्रेड करेंगे, देखो ये सबसे एफिशिएंट तरीका है. Why I'm not solving stack? Because this is the most efficient way. यहाँ आपको कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं लेना है, लेफ्ट राइट लेना है, बट स्टैक नहीं लेना है, ठीक है? तो वेक्टर में काम हो जाएगा, ठीक है? स्टैक इज ऑल्सो, स्टैक भी सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सेम स्पेस कॉम्प्लेक्स, सेम सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट्स असाइनमेंट फॉर यू गाइस. आपको ट्राई करना है स्टैक से, ठीक है? अब क्या करें, अब हमें पूरी लेफ्ट रे बनानी है. हाउ विल क्रिएट इट? I will start from index number 1, and just like you find the prefix sum. तो अगर आप लोगों को prefix sum, prefix मैच निकालना नहीं आता हो, तो हमारी लास्ट मास्टर क्लास लास्ट सैटरडे को पूरा इसी टॉपिक पे हुई थी, prefix sum पे. तो you guys can check that master class. For now इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि left of I will become maximum of a order of I and left of I minus 1. तो पिछले का और करंट का मैक्स लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सेम राइट के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम n minus 2 and move forward, and right of I will be the maximum of current I comma right of I plus 1. तो इस तरीके से तुम्हारा लेफ्ट एरे और राइट एरे बन गया. लेफ्ट एरे फ्रॉम हियर, राइट एरे फ्रॉम हियर. ओके, then it will be, I will just iterate through all the elements. ठीक है? What I will do, I will find the minimum of okay, wait, I will find the minimum of left of I and right of I. So what we did, we found minimum of left of I and right of I, and subtract the current element from it. This will be the water that will be filled in that ith block, and for finding the total sum of all the waters, you will just take a sum where you will add this thing and finally return your sum. It's done. हो गया. I saw your prefix master. It was great. Yeah, thanks Gurva. Yeah, in that masterclass I tried to cover everything, yeah, all the possible combinations and all of that. Okay, great. So it's done. Let's submit it. Done. Okay. So this is how we are solving our problem. Does it make sense to everyone? क्या ये प्रॉब्लम सभी क्लियर है? And time complexity is less order of n, space complexity is also order of n. No other issue. Clear है guys? ठीक है? Any doubt anyone is having? गुरुवा, डीएस, आदर्स क्लियर हो गया ना? तो अब एक काम करो. Now I will, so I know we have done a lot of problems till now. We solved this problem. Yeah. Okay, if you want, can we do dry run? हाँ, dry run तो मतलब okay. Can you please explain the postfix to infix? ठीक है. So Gurva, that we can maybe take after this. Okay. So after this, I will take that problem. Okay. Great. So yeah, we started from this. Okay, you wanted me to dry run, right? Cancel.
हाँ, तो देखो क्या कर रहे हैं यार, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, तो इसमें इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है. सो ये मेरा कोड है, ठीक है, एंड दिस इज आवर लूप लेट से. तो क्या करेंगे हम लोग, सो ये हमारी अरे थी 0 3 0 1 0 4 0 2, राइट. So first I will get the left array. So left array is of same size, right array is of same size. So I will take a left array and I will take a right array. Okay. So left 0 I am making 0, right last I will make same. So this will be 3 and this will also be 2. क्योंकि हम यहाँ से मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो यहाँ तक का मैक्सिमम तो 3 आएगा. तुमने 3 ले लिया, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, आई एम सेइंग लेफ्ट ऑफ आई विल बी मैक्सिमम ऑफ ए आर ऑफ आई एंड लेफ्ट ऑफ आई माइनस 1. तो मतलब हम इसका और इसका मैक्सिमम लेके यहाँ पे लिख देंगे. तो maximum of 3 and 0 will be 3 only. Maximum of 3 and 1 will be 3 only. 3 0 3, 3 4 4, 4 0 4, 4 2 4. सेम अगर पीछे से करेंगे तो maximum of a order of I and right of I plus 1. So इसका और इसका maximum will be 4 4 4 4 4 4. तो इससे क्या हमने लेफ्ट और राइट एरे निकाल लिया. देखो अगर आप ड्राई रन करोगे ना, यू विल ऑल्सो गेट इट. ठीक है, आपको भी देखो साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठना पड़ेगा यार. अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो नहीं आने वाला, तो खुद भी इसको करो. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बोल रहे हैं कि मिनिमम निकालो लेफ्ट और राइट का. यहाँ पे देखो आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आया 3 3 3 3 4 4 2 और उसमें से ए आर ऑफ आई को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहाँ से -3 हुआ, -0 -1 -0 -4 -0 -2. तो ये हुआ 0, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 0 4. ओ ये आई थिंक 2 आएगा, मैंने एक गलती कर दी. सॉरी गाइस, मैंने एक गलती कर दी. यहाँ पे 2 आएगा, बस वन मिस्टेक आई डिड. यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 होगा. तो 2 and 0. ओके, तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 2 + 3 + 2 विच इज 10 सम. ठीक है, तो एक बार एक काम करो, आई नो दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मैं एक काम करता हूँ. ओके, अदर्स दिएश एंड गुरवा, आई एम गिविंग यू गाइस सम टाइम. थोड़ा टाइम लो, टेक नेक्स्ट 10-12 मिनट्स, बी रिलैक्स, थोड़ा टाइम लो, इस प्रॉब्लम को ट्राई करो, पूरा ड्राई रन करो, अपने पेन पेपर लेके खुद से कोड करो, अभी सॉल्व करो क्लास में ही. कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो. आफ्टर दिस 10-12 मिनट्स ऑफ ब्रेक वी विल कम बैक एंड वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स. एक ये सॉल्व कर सकते गुरवा, व्हाट यू आर आस्किंग, postfix to infix. This I will take after the break. Okay, so let's take a small break. After that we will solve these problems which you guys are asking. Okay, great.
Yeah. Hello guys. Can we move forward? Hello, hello. Are you guys there? Education updated new. Gurva, DAs, others. आगे बढ़े. ये प्रॉब्लम तो क्लियर है ना? पक्का? This problem is clear, right? So okay. नाइस, ठीक है, बढ़िया यार. तो कंटिन्यू करते हैं. तो आई थिंक यू सेड गुरु राइट, दैट इज अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली. तो आई विल टेक दैट postfix to infix, right? So let's see that how we can convert a postfix to infix. I will take that problem. So this is the problem, guys. The problem says that you are having a string that represents the postfix form of a valid mathematical expression. Convert it to its infix form. ठीक है. अब थोड़ा सा हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि पोस्टफिक्स और इनफिक्स होता क्या है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. तो होता क्या है यार, होता क्या है. let's say that our string is like this. ठीक है. अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टफिक्स फॉर्म. तो देखो हम लोग जिस फॉर्म पे काम करते हैं ना, द फॉर्म दैट वी यूज इज अ इनफिक्स फॉर्म. इस अगर मुझे कोई एप्लीकेशन कुछ लिखना हो, लेट्स से मुझे लिखना हो a प्लस बी, या यहाँ पे से a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. दिस इज हाउ वी विल राइट, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज इनफिक्स फॉर्म. दिस इज नोन एज द इनफिक्स फॉर्म. ठीक है. अब इसी में अगर मैं जो इसके वेरिएबल्स हैं उसमें इनफिक्स में क्या होता है, इनफिक्स होता है ऐसा a प्लस बी मान लो. प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो पहले आ जाता है, ऑपरेंड्स बाद में जाते हैं. मतलब कि a प्लस बी का प्रीफिक्स फॉर्म हो जाएगा प्लस ए बी, और इसका जो पोस्टफिक्स फॉर्म है ना, पोस्टफिक्स फॉर्म हो जाएगा ए बी प्लस. तो ये अगर तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो इसका प्रीफिक्स फॉर्म हो जाएगा प्लस ए बी, और पोस्टफिक्स फॉर्म हो जाएगा ए बी प्लस. ठीक है. ये बात क्लियर है सभी को? इज दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी. ठीक है. चलो अब देखो, अब ये तो सिर्फ मैं दो वेरिएबल्स बता रहा हूँ कि a प्लस बी के लिए निकल आया. अब इसीलिए बड़े एक्सप्रेशन के लिए भी निकलते हैं. ठीक है. जैसे कि इस वाले अगर मैं पोस्टफिक्स की बात करूँ, ठीक है, कि इस फॉर्म के लिए पोस्टफिक्स क्या होगा, वो क्या होगा. तो पहले पहला ब्रैकेट देखा जाएगा, तो ये a इंटू बी है, तो इस a इंटू बी का पोस्टफिक्स आएगा ए बी मल्टीप्लाई. ठीक है. और प्लस सी है. अब ये एक एक ऑपरेंडर, ये एक ऑपरेंडर, ये ऑपरेंडर, इसके लिए आएगा ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस. तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ये इसका पोस्टफिक्स होगा. और इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन का जो प्रीफिक्स होगा वो ये होगा. तो आपसे बोला गया है कि आपको एक प्रीफिक्स है, आपको एक पोस्टफिक्स दिया गया है और आपको उसका इनफिक्स निकालना है. तो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सभी को क्लियर है? इज द प्रॉब्लम क्लियर एवरीवन? अब देखो इन क्वेश्चंस में जितने भी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्वेश्चंस होते हैं, इन सब में ही हम लोग इस टैग का यूज करते हैं. अब देखो करेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. हाउ विल डू दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्टैक ले लेंगे. ठीक है.
हम एक स्टैक ले लेंगे और हमें जो स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी क्या है, a प्लस बी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, हमें मेन जरूरत है ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग। तो इसमें हम पहले किए आएंगे। अब देखो जब भी हमें कोई ऑपरेटर, क्योंकि उसमें 4 ही ऑपरेटर आई थिंक, सो दे आर सेइंग दैट इट विल हैव द 3 ऑपरेटर्स, आई थिंक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो 4 ही होंगे। यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट अगर मैं कमेंट्स में चेक करूं, यार 4 ही होने चाहिए, वैसे बाकी लोगों ने तो ऐसा नहीं किया है। अच्छा, तो अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फाबेट डिजिट के अलावा कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही होंगे। तो पहले ना क्या करेंगे कि भाई अगर हमारा गिवन जो कैरेक्टर है, अगर वो एक अल्फाबेट है या अगर वो एक डिजिट है, तो हम उसको इस स्टैक में पुश करते हैं। जैसे ये ए है, ठीक है, तो हमने ए को स्टैक में पुश कर दिया। फिर बी आया तो हमने बी को पुश कर दिया, ठीक है। अब हमें मिलता है ये मल्टीप्लाई। अब जो हमें मल्टीप्लाई मिला ना, मतलब ये जो मल्टीप्लाई था ये इसके पिछले के 2 ऑपरेंड्स के लिए उसका मल्टीप्लाई था। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। तो क्या होगा जब हमें कोई ऑपरेंड मिलेगा, ऑपरेंड मतलब सॉरी ऑपरेटर मिलेगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, तो हम स्टैक के जो भी 2 टॉप के एलिमेंट होंगे उनको निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने पहले अपना निकाला टॉप 1, वो आया बी, उसको हटा देंगे। फिर हम निकालेंगे टॉप 2, जो आएगा ए, उसको हटा देंगे, निकाल लिया। और हमारा करंट कैरेक्टर कौन सा है, मल्टीप्लाई है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि इस ए बी मल्टीप्लाई के लिए इसका इनफिक्स क्या होगा, बताओ इस ए बी मल्टीप्लाई का इनफिक्स क्या होगा, कैन यू टेल मी, कोई बताएगा। ए इंटू बी होगा, राइट, ए इंटू बी होगा, बिल्कुल सही है, राइट। तो इस ए बी मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा ए इंटू बी। कैसे करेंगे ए इंटू बी, इंटू ए बी हो जाएगा उसका प्रीफिक्स डीएस, हमें चाहिए इनफिक्स, इट विल बी ए इंटू बी। तो उसके लिए क्या, हम लोग उसके लिए इसका जो TP2 था ए, उसको उठाएंगे, प्लस ये कैरेक्टर उठाएंगे, प्लस TP1 उठाएंगे, तो आ जाएगा ए इंटू बी। और ये लोग बोल रहे हैं आप उसके आगे पीछे ब्रैकेट डाल दो, तो हम ब्रैकेट डाल देंगे, और वो फिर हमारा फाइनल जो है फिर से हमारे स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको बताते हैं हमने क्या किया। मैं सब कुछ बैक करता हूँ, मैं सब कुछ बैक करता हूँ। हमारे पास पहले एक ए था, समझना समझना, हमारे पास पहले एक ए था, हमने उस ए को इंसर्ट कर दिया। फिर एक बी था, हमने उस बी को इंसर्ट कर दिया। फिर हमें एक मल्टीप्लाई मिला, तो हमने निकाला एक हमारा टॉप 1 जो कि है बी। फिर हमने निकाला टॉप 2 जो कि है ए, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमने कहा भाई टॉप 2 प्लस जो करंट एलिमेंट है CH प्लस टॉप 1, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, और उनके करस्पॉन्डिंग में ब्रैकेट भी लगा दिए। मतलब हमने इस ए प्लस स्टार का प्रीफिक्स निकाल लिया, इनफिक्स निकाल लिया, उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आया सी, तो सी उठा लिया हमने, सी यहाँ डाल दिया। अब फिर आ गया प्लस, अब फिर से जब प्लस आ गया तो क्या करेंगे, पहले टॉप 1 निकालेंगे, सी आएगा, टॉप 2 निकालेंगे तो ये ए इंटू बी आएगा। अब अगेन सेम क्या करेंगे, टॉप 2, यहां देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टॉप 2 प्लस CH प्लस टॉप 1 और उनके आगे पीछे ब्रैकेट्स, तो टॉप 2 हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट, और ये आज हट जाएंगे। और फाइनली जो है, फाइनली ये जो है आपका, ये जो पार्ट है ये आपका स्टैक में चला जाएगा। और अब देखो आपका लूप हो चुका है पूरा एंड।
तो लास्ट में जो भी स्टैक में बचता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस जहीर? डीएस एजुकेशन अपडेटेड अदर्स गुरुआ। देखो यार, चीजें डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है, बट अगर आप लोग पेन पेपर लेके ड्राई रन करोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सम एफर्ट्स, ऐसे इतनी आसानी से नहीं आएगा, इट विल टेक सम एफर्ट्स। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आई विल ड्राई रन। सो मैं पहले कोड करते हैं और साथ साथ उसका हम लोग ड्राई रन भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले तो हमें एक स्टैक चाहिए और वो स्टैक स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कैरेक्टर नहीं जा रहे हैं हमारे, उसमें जो है एक स्ट्रिंग भी आ सकता है, पूरा एक्सप्रेशन, राइट। साइज निकाला और हमने एक स्टैक लिया स्ट्रिंग का। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे। अब जब जब हमें कोई भी अल्फाबेट या नंबर मिलेगा उसको हमें इस स्टैक में इंसर्ट करना है एज अ स्ट्रिंग। तो हमें लेंगे, हम लोग करंट नंबर कौन सा है वो हमने निकाला। ठीक है, तो हम अपना करंट कैरेक्टर निकालेंगे। वी विल, गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ। ठीक है, तो हम अपना करंट कैरेक्टर निकालेंगे। ठीक है, आई थिंक टैग नहीं अपडेट हुआ है, राइट, अभी भी द प्रीवियस टैग इज ओनली विजिबल। Yeah, I think guys there was some network issue. Is it fine now? Yeah, I hope that it is fine now. मैं एक बार अपने फ़ोन पे भी चेक कर लेता हूँ। मेरा वाईफाई ज़्यादा देर चलाओ तो पता नहीं क्या दिक्कत आती है उसको। लेट मी चेक वंस। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, राइट। हाँ, तो या व्हाट वी डिड, वी सेड कि ओके लेट्स टेक द करंट कैरेक्टर। ठीक है, तो हमारे मान लो करंट कैरेक्टर यहाँ पर है, ये है। अब इफ द करंट कैरेक्टर इज नॉट दिस एनी ऑफ द सिंबल देन जस्ट पुश इट। जैसे 1 है और ए है और बी है, उन्हें पुश कर दिया इस टाइम में। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो आई विल से इफ इज, तो एक फंक्शन होता है इज अल्फा सी प्लस प्लस में, नहीं पाइथन में नहीं, या ये होता है। तो एक फंक्शन होता है इज अल्फा और एक फंक्शन होता है इज डिजिट, इज डिजिट या इज न्यूमेरिकल होता है, इज नम भी होगा। तो ये दोनों फंक्शन काम करते ही बताते हैं कि आपका जो गिवन कैरेक्टर है वो क्या है, डिजिट है कि फंक्शन। तो अगर ये अल्फा है या फिर ये एक डिजिट है, ठीक है, सी एच, तो हम इसको हमारे स्ट्रिंग में पुश कर देंगे। और पुश हमें करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो सी एच तो नहीं होगा पुश होगा, हम सी एच को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग फंक्शन से, तो ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने हमारे ए को और बी को इस टाइम में पुश कर दिया। ठीक है, अब हमारे हमारे इसके पास ऑपरेटर, अब ये हमारा आ गया एक ऑपरेटर। अब क्या होगा, अब जब ये ऑपरेटर आ गया तो हम लोग जाएंगे एल्स पे। एल्स पे एज आई टोल्ड यू आई विल फर्स्ट गेट माई TP1 विच इज बी। तो हम TP1 लेंगे, स्ट्रिंग TP1 st.top और उसको हम वहां से हटा देंगे। तो लिया और हटा दिया, तो हमने इसको बी लिया और यहां से पॉप कर दिया। सेम हम TP2 लेंगे ए, इसको भी यहां से हटा देंगे। तो हमने एक TP2 लिया और उसको वहां से हटा दिया। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो TP1 टॉप वन आ गया, टॉप टू आ गया, राइट। सो टॉप वन इज बी, टॉप टू इज ए। अब हमें मिल गया ये ऑपरेटर, और ऑपरेटर है हमारा सी एच, क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या था, इस तरीके से। तो पहले हम लगाएंगे एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आएगा TP2, फिर ये कैरेक्टर, फिर TP1, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारी स्ट्रिंग एक बनेगी, मान लो स्ट्रिंग एक्स, ओपनिंग ब्रैकेट, TP2, फिर कैरेक्टर, फिर TP1, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम ये होगा। और फिर ये जो चीज है ये फिर से स्टैक में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा ये एक्स। ठीक है, और फिर कंटिन्यू हो जाएगा, आगे बढ़ते। अब देखो आगे बढ़ेंगे क्या होगा, अब आएगा सी, तो फिर से सी यहाँ इंसर्ट हो गया। अब फिर आ गया प्लस, तो फिर आ गया प्लस मतलब पहले TP1 आएगा सी, TP2 आएगा ए इंटू बी, दोनों स्ट्रिंग होंगे। और फिर वही काम करना है हमें, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, और इस फॉर्मूले से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला था, टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है एक्स, ओपनिंग ब्रैकेट TP2, देन दिस थिंग, ओ सॉरी TP2 पहले है, एंड प्लस TP1। ठीक है, और फिर फाइनली वो भी आपका स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। और लास्ट में स्टैक में जो एक सिंगल वैल्यू बचेगी, ये वाली एक ही बचेगी लास्ट में, अगर एक वैलिड पोस्टफिक्स है तो वो वैल्यू लास्ट में आपकी इंसर्ट हो जाएगी, जो भी आपके स्टैक के टॉप पे बचेगी। दैट्स इट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां भी ऑर्डर ऑफ n है, नथिंग एल्स। ओ एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जब मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ ना कैरेक्टर को, तो टू स्ट्रिंग में ना वो कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा उसमें इंटीजर में। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। यार कैरेक्टर टू स्ट्रिंग कैसे होता है सी प्लस में, तो इतने सारे फंक्शंस है ना, वो कुछ होता है स्ट्रिंग वाला चीज होती है कुछ, हाँ ये एक तरीका होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ और तरीका नहीं है। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वो जो कैरेक्टर है वो उसका स्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो ये हमने बस मैंने इतना किया है कि आपके जो कैरेक्टर था उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इतना ही किया है बस, सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, so this is how we have solved our problem. Okay, this is how we have solved our problem, postfix to infix conversion. ठीक है, इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इट वाज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, जहीर, गुरवा? ठीक है, सो गाइस इन टुडेज सेशन वी डिस्कस स्टैक। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो आई एम गिविंग एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क। दिस प्रॉब्लम इज प्रीटी सिमिलर टू द ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। आप लोग ट्राई करना, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में पक्का ले लूंगा। ठीक है, ग्रेट, कूल गाइस। सो वी स्टार्टेड विद द स्टैक गाइस। ठीक है, हमने स्टैक के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक। सो So we started from here, that what is a stack,
We discussed everything about stack is a data structure that follows the LIFO property LIFO technique, right? Then we discussed how we can implement the stack using array. Then we discussed how we can implement the stack using linked list that we discussed. Then we discussed how we can this both we discussed using array and linked list. Then we discussed how we can use stack in STL. Then we discussed applications of stack. We started with a problem called how to reverse a string. Then we did how to delete the middle of the stack. There's a very recursion also, that is your assignment to solve. Okay. Then we discussed the valid parenthesis problem to check whether a parenthesis is valid or not. We solved it using a stack. We ran the code. We had to dry run. Then we discussed how we can find the next greater element. This was a very important, very good problem. Okay. Then we discussed the next greater element for the circular array. वो हमने डिस्कस किया, ठीक है. Then we discussed this problem with stock span problem, ठीक है. It was stock span problem. Then we discussed this problem of trapping rainwater. Then we discussed this problem of how we can convert our postfix to infix. So I tried to cover all the possible combination of stack problems. I'm not saying all are covered. I'm saying most of them are covered. The most of the important one are covered, and through that you can solve any other problem of stack, right? Is this CP based? So then this is not specific to CP. I'm solving a problems from Geeks for Geeks only. I'm not so specifically saying CP means you consider problems from code forces or code ceph, right? So I have not solved any other code forces or code ceph problem, but yeah, concept is same, guys. Like CP is nothing different. CP is the DSA concepts only. So if you will go through this whole class, you will be having a good clarity of stack, and you can solve your CP or code forces level problems also. That is completely fine. Okay, great, guys. Cool. So, guys, our next session of DSA marathon, because we have done stack today, you must have guessed what will be our next session. So next, I'm thinking Q and DQ. Okay. So I'm thinking the class for Q and DQ in our next DSA marathon. Okay. I will be going through the basics of Q and DQ, and I will be covering all the important concepts of Q and DQ. Right. So let's see. Probably so this weekend, as I was not busy, I was not free on Saturday. I was busy, so I took this class on Thursday. Next weekend, it will be probably on the expected time only. It will be next Saturday, like not this Saturday, not day after tomorrow. It is next Saturday. Okay. Right. So that is one thing. Uh, let me take some questions. Yeah, Q and DQ it will be. Yeah. When will they? So next session will be on next Saturday, not this Saturday actually. Next Saturday, right? So I will take. Sir, go to Amazon for any product-based company. We first go through internship over there if they don't come to work. So yes, DSC, going to a better product-based company, internship is always a good option, because going in an internship is not that much difficult. The interviews are not that much difficult. Even when I went to LinkedIn, it was an internship. When I went to Zeta, it was an internship. Okay, so whatever, because in my college also good companies come. Like I'm not saying my college good companies doesn't come. In my college, Gamescraft came, Zscaler came. I cracked both of them through college also. But other off-campus company which I cracked, for example, either it is Zeta, either it is LinkedIn, all of them I cracked off campus, and for both of them I first cracked their internship. I get into it in the internship, and through that internship, then later I got the full time, right? So this is so I will say, yeah, for a person, internship is a really great opportunity to get into a company. But yeah, always there's a risk. You can never say that if you get an internship, you will get a full time. There are lots of time they do not have, maybe that there's no opening in your team, or if there's a recession going on, they will not hire you as a full time. Okay. So government service offer for internship offer on the produce company. So D is, as I said you previously, as I said you, key. See, as I said you, getting an internship does not guarantee you a full time offer. I have seen multiple big companies like Amazon, LinkedIn, Microsoft who have given internship, but they have not given the full time offer, right? So it's always a risk if you are going for an internship and not a full time. It's always a risk. They can, just skip you after that internship, right? So it will be a risk
And if you are even having a service-based offer, it's at least a full-time offer, right, DS? Huh, but if it's a very bad service-based company and in replacements of that you're getting a very good product-based company, ठीक है तो आप सोच सकते हो. Let's say if it's a very small service company, not a very good, uh, very small package, very less package, and in comparison you are getting a very good product-based company, not a small any small startup or something, a very good MNC, a good product-based company, then you should go. Then I will say yeah, you said, but again, do not listen to me. Otherwise, अगर कल को आपको नहीं मिला placement, then full time, then you will say Abhinav, you said right. So yeah, please take the session after 8 p.m. in weekdays. It's difficult to attend before. Okay, Gurva, I listen you here. Okay. Yeah, I take your point. So yeah, like so mostly we will not have on weekdays. Even I am not free on weekdays, right? I have multiple other works on weekdays, but because this weekend I was busy, I took it on weekdays. Otherwise, we do not have this on weekdays. We'll be always having this on weekends only, right? So, but yeah, it's a matter of some weeks only. But yeah, I will see if we can. And even the first 1 hour of the class, Gurva, is basics only. So maybe you can join at 8 or something like. Great. Cool, guys. If there's no other doubt, I hope the session was helpful for today. Okay, next session we will come back, and guys, do check out the 390 challenge by Geeks for Geeks. Okay, it's running. So yeah, do check out the courses at Geeks for Geeks. Right. Cool, then, guys. If there's no doubt, we can conclude. Maybe we will meet next week with Qs and DQ as a topic. Thank you. Take care. Bye bye. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready.